Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. Or I know there have been a few complaints that we haven't been live from the last couple of days, but that is because we were doing a lot of content. जो आप देख ही रहे हो, hopefully आप लोग नहीं देखे तो भाई you check it out later on. There's a lot to be discussing. लेकिन जो हुआ in these couple of days, of course, by big news for everyone out there, obviously is डेक्लन राइस जो सागा चल रहा है. बहुत सारे सागा चल रहे हैं अभी. एम्बापे सागा, मेसन माउंट सागा, डेक्लन राइस सागा ऑब्वियसली बीइंग द लेटेस्ट वन. लेकिन हाँ, एज थिंग्स स्टैंड, मैंने कम्युनिटी में डाला भी था सुबह, एज वेल एज आई एम प्रीटी श्योर वी ऑल हैव द नॉलेज दैट डेक्लन राइस लुक्स लाइक ऑल प्रोबेबिलिटी दैट वो जा रहा है आर्सेनल को. यस, एंड दैट इज फॉर पीपल जो छुट्टी पर गए थे भाई. डेक्लन राइस, अ गाय that has been sought after for the last couple of seasons, if not more, is going to Arsenal Football Club at 100 million pounds plus 5 million add-ons. I repeat, Arsenal Football Club are shedding out 100 million pounds plus 5 million pounds for Declan Rice by the England International. Looks like it हो जाने वाला है. हाँ, कहीं ना कहीं पेमेंट टर्म्स की बात चल रही है अभी, बट हो जाएगा. मैन सिटी ऑन द अदर हैंड have backed out. Is it because they don't want to be in the race जो उन्होंने किया था recent seasons में in a couple of big transfers, or is Pep Guardiola actually helping Arteta कहीं ना कहीं? There is a lot to be discussed there, but of course Mbappe saga जैसे मैंने बोला है, Mason Mount saga we have to discuss. Guardiola going to Man City, meanwhile maybe that move, Declan Rice going to Arsenal might help City यार. कहीं ना कहीं FFP जो already थोड़े बहुत claim चल रहा है when it comes to UEFA, FIFA, etc. They might actually escape that with Guardiola and not shedding out on Guardiola and Declan Rice. और भाई meanwhile Chelsea क्या कर रही है? घंटा कर रही है भाई, घंटा कर रही है. हम लोग दे रहे अपने बेस्ट प्लेयर्स टू आवर कंपेटिटर्स. ले लो भाई, थाली में परोस के ले लो अपने बेस्ट प्लेयर्स ले लो, और आप अपना स्ट्रेंथन और करो. हम तो घंटा गएंगे ना भाई, हमें कुछ नहीं पता है भाई. रियली ब्रो, रियली पिस्ड ऑफ. और फॉर पीपल आउट देयर, आपने देखा होगा मेरे ट्वीट्स, मुझे काफी सारा मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है ऑन द ट्वीट्स दैट आई हैड इन द लास्ट 24 आवर्स. देखिए, हमें सब पता था कि मेसन माउंट इज गोइंग टू गो एट वन पॉइंट, कोवाचिच डेफिनेटली विल गो, हैवर्ट्स विल गो, व्हाट नॉट, कांटे विल गो. भाई हम देख रहे हैं एडवर्ड मेंडी भी हो गया है, एज वेल एज जीएच भी हो गया है, कुलीबाली हो गया. हमें सब पता था होने वाला है, समवेयर ऑन द लाइन इट वाज नीडेड. बट एक बात होती है व्हेन इट बेसिकली इज नियरिंग, और एक बात होती है व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस. भाई रियलिटी हैज स्ट्रक ब्रो, रियलिटी हैज स्ट्रक. आज के दिन में उस चेल्सी मिडफील्ड में है कौन भाई? एक एंजो फर्नांडेस जो अकेला बंदा कर रहा था जनवरी से, अभी भी वही लौता इंसान है भाई. अभी क्या गारंटी कि ब्राइटन विल गिव अस काइसेडो? हम काइसेडो पर स्पेंड करेंगे क्लोज टू 100 मिलियन गाइस. आर्सेनल फुटबॉल क्लब हैज स्पेंट 100 मिलियन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑन डेक्लन राइस, जस्ट सेइंग. और एक सीजन हम चैंपियंस लीग में नहीं है भाई. आर्सेनल, मच रेस्पेक्ट टू यू, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन लंदन. Everyone, Arsenal Football Club, sorry guys, what have they done? घंटा उखाड़ा भाई, 7 साल से घंटा उखाड़ा उन्होंने, कुछ नहीं उखाड़ा उन्होंने. How is Declan Rice going to Arsenal, man? Please let me know. क्या किया लास्ट सीजन भाई? क्या जीता क्या है डेक्लन राइस? क्या जीता है डेक्लन राइस ने? कॉन्फ्रेंस लीग क्या जीता आर्सेनल फुटबॉल क्लब में? गिव मी हेट गाइस, आई डोंट केयर. What has Arsenal done to get Declan Rice at 100 million? I'm pissed off to the core, and trust me, I am absolutely pissed off. और कहीं ना कहीं Pep Guardiola is helping और Arteta. Let's be real about it. Let's be absolutely blatant real. भाई reality is that, and सच्चाई कान में दुखता है भाई, सच्चाई सुनते हो तो इसलिए दुख रहा है आप लोग को. But again, much love for everyone joining in. Bhai, a lot of it is inside me and a lot of it has to come outside. Trust me on that. For people who are offended, bhai, stay offended. Absolutely no issues on that. आप यहाँ पर देख रहे हो एक चेल्सी फैन जो देखा है at times, how times have changed bro, how times have changed. यहाँ पर हम यहाँ बांट रहे कोवाचिच भाई, all the people that we targeted for years together are going to other clubs. हमारे खुद के प्लेयर्स जा रहे. There were times when they wanted to come to Chelsea. I totally understand them being interested in a Man City. I totally understand to some extent Manchester United B. I repeat, what has Arsenal Football Club done? They have bloody bottled it in the last year. They have bottled the league. They have bloody won shit in the last 6-7 years. I'm really pissed off. I know that. Kahin na kahin I'm jealous. You can say that, whatever it is. Trust me, bro. Trust me. If not for Pep Guardiola and Man City, Arsenal would not have got a couple of players. And if not for the foolishness of Todd Boehly and co, जिसके कारण हम Kai Havertz को दे रहे Arsenal को.
Seriously, guys, seriously. And it is a rival, guys. For people who are not understanding my reaction, you need to really be me for 25 years, what I have been. Really, that is a fact. But anyway, let me actually take a few comments. I know काफी लोग wait कर रहे हैं काफी समय से, and I cannot disrespect the guys. Absolutely, fans, nothing against you, especially Arsenal and Man City fans. But it is what it is. Things will not change. हमने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारा है, एंड हम सोच रहे हैं फीफा मोड में चल जाएंगे वापस, जैसे हम भाई खरीदे थे प्लेयर्स अब बेच देंगे वापस और वापस से आ जाएंगे, वापस से चेल्सी डीएनए आ जाएगा ओवरनाइट. व्हाट द ब्लडी शिट इज दिस ब्रो हैपनिंग? सीरियसली मैन. एनीवे, बिग अप टू अनिमेश यार. सॉरी गाइस, अगेन रियली सॉरी फॉर माय रैंट, बट बहुत चीजें मेरे अंदर, बहुत चीजें हैं भाई. पिछले 70 घंटे से मैं रख रहा हूं मेरे अंदर, सच में बोल रहा हूँ. स्पोर्ट फ्रीक, क्या हाल है भाई? गैब्री वेगा टू सिटी, हाँ ये भी ले लो भाई, गैब्री वेगा भी ले लो. यस, लुक्स लाइक सोबोसलाई टू न्यूकासल और लिवरपूल, गैब्री वेगा टू सिटी. हमें मिलेगा घंटा लड्डू पेड़ा. दैट्स व्हाट चेल्सी को मिलेगा अब लास्ट में. आएंगे उस पर, आएंगे प्रज्वल, डेफिनेटली आएंगे. यूनाइटेड कब साइन करेगी भाई? आई एम टेलिंग यू गाइस, यूनाइटेड एंड चेल्सी आर बेसिकली गेटिंग द बैड डील एट द एंड ऑफ द डे. दैट इज हैपनिंग फॉर मी इन माय पर्सनल ओपिनियन. Right, for 100 million pounds is overpriced in my opinion. 100% agreed. Couldn't have agreed more on this comment. कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड आप बोलोगे, क्योंकि मैं जब चेल्सी फैन था, जब चेल्सी लिंक हुई थी, एंड ऑफ कोर्स अभी भी हो चेल्सी फैन, नोट टू बी सपोर्टेड, लेकिन जब हम लिंक हुए थे मैं बोलता था राइस के लिए देना चाहिए. क्यों? क्योंकि वी वर इन अ पोजीशन वेयर वी डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ सिल्वरवेयर जो हम जीतते आ रहे फ्रॉम द लास्ट 25 ब्लडी इयर्स. एंड यस आई नो, मैं खाली 25 साल से देख रहा हूं. What has Arsenal done? Yes, I know बहुत सारे Arsenal fans, I love them absolutely to core. But what have they done from the last 6-7 years to basically make these statement signings? I am pretty sure there is a fact that because Arteta was number 2 to Pep, this has happened. This has happened. Trust me that this has happened. This wouldn't have happened in a normal scenario. It wouldn't have happened. Let me tell you honestly. Mbappe to Liverpool, no chance. 100% agree with this. भाई क्लिक बेट से बचकर रहना, भाई क्लिक बेट से बचकर रहना, एब्सोल्युटली क्लिक बेट से बचकर रहना. Mbappe to Liverpool and as well as Valverde to Liverpool नहीं होने वाला. And I know I'll be joined with a Real Madrid fan as well on the panel. मैं बात करूंगा उनसे एब्सोल्युटली. Do you think Castellani can be a backup to Enzo Nkunku? देखिए यार, with all due respect to Castellani, भाई बहुत अच्छा किया अंडर 21 में, एब्सोल्युटली अच्छा किया CFC उत्कर्ष, बहुत अच्छा किया. अंडर 20 में करना एक चीज है भाई, और डूइंग इट इन सीनियर फुटबॉल इज डिफरेंट ब्रो. हम यहां पर वही फीटिश, एवरीवन सीज माय ट्वीट्स, व्हाट द ब्लडी शिट आर वी डूइंग. आज एक और साइनिंग किया, वाओ, लेट अस सेलिब्रेट ब्रो, लेट अस सेलिब्रेट. चेल्सी हैज मेड अनदर यंग साइनिंग, 18 साल का बंदा. हम क्या कर रहे हैं यार? हम कर क्या रहे हैं? वेयर इज द ब्लडी डीएनए ऑफ द ब्लडी क्लब? Seriously guys, I'm sorry if I'm shouting into your ears, please reduce the volume, but I'm really pissed off right now. And I'm really pissed off. And if no one is hearing my tweets, no one is hearing my, whatever voice I have, this is the best I can do. And if you guys really want this voice to go, and even opposition fans, I request you to please hit that like button, because that is how this voice will reach to my bloody club. And these bloody Todd Burley and idiots who have come in, don't know shit about football, and have come and ruling my club. Spoiled my bloody club. बिजनेस बना दिया भाई, लाइप्जिग बना दिया हमको. लाइप्जिग और ब्लडी सॉल्जबर्ग है क्या? हम चेल्सी फुटबॉल क्लब है यार. एनीवे, क्या हाल है भाई प्रेडेटर गेमिंग? देखिए यार, एंजेलो गैब्रियल, नाइस मैन. लेट्स भाई भंगड़ा करे, भंगड़ा बनाए घंटा गैंग. एंजेलो गैब्रियल हो सकता है भाई बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग. अभी क्या यार, वी विल ब्लडी नॉट हैव चैंपियंस लीग फुटबॉल फॉर नेक्स्ट डेकेड. यही रहता तो सब 18 साल 20 साल. What the bloody hell have you won with since 18 years old, bro? What has Arsenal won with all the young team? They were brilliant to watch. Don't get me wrong, Arsenal were brilliant to watch. हमने क्या देखा? बॉटल किया उन्होंने लीग. क्यों? क्योंकि उनके पास नहीं था वो एक्सपीरियंस ऑफ विनर्स. And that is what they're getting right now. Looks like it. And everyone who hated me for Havertz, yes, we have got a lot of money for Havertz. Big deal. मैं आपको लिखकर बोल रहा हूं भाई, लिखकर बोल रहा हूं आप लोगों को सबको. Kai Havertz will do much better than Arsenal than Chelsea Football Club. And I know kahin na kahin Kai Havertz is also to blame. Definitely.
Kai Havertz and Kovacic will do much better at Arsenal and Man City respectively than Chelsea Football Club. We have not bloody managed them well, and that is the utter truth. And this goes out to my fan, the social media, the people who hated your own bloody players. Mason Mount ko hate milna do bhai, aur hate do. I'm writing and giving you Mason Mount, Kai Havertz and Kovacic will become much better players in their respective clubs in future. Just wait and watch. Anyway, I'll be skimming a few comments. Bhai, Pranay, I understand they paid 100 million. I totally get it. But the fact is, agar aap Declan Rice ho, I am literally shocked, man. Even Declan Rice ke perspective se. Why do you don't want to go to Bayern Munich? Why do you don't want to go to Man City? I have question marks wahan par on the intention of the player. Does he really think that do we really think that the greatest British transfer that has ever happened in terms of British players, will it basically change Arsenal to the moment that they go on to Champions League football and win the Champions League? Again, मैं बोलता हूँ भाई, Arsenal fans and neutrals, if you think you disagree, totally fine. आपका opinion है. घंटा उखाड़ा भाई, घंटा उखाड़ा आर्सेनल ने. यूरोप में they have not bloody won a European Cup, bro. Anyway, Sushant Bhara, Ankit Bhaiya, Caicedo आएगा. Rice don't want to come. That's simple with Chelsea. Kai is over for us. We have to move on now. New players we can't build around. 100% agreed. I cannot disagree on this comment, Sushant. लेकिन आप एक साथ नहीं जाने देते हो सबको, और वो भी उसमें से आधे प्लेयर्स आपके राइवल्स जा रहे हैं भाई. We are not bridging the gap that has been created in the last couple of years. We are basically extending it even more. That's how bad it is. But anyway, बासमती होता तो कितना I don't know, man. Predator Gaming. भाई बहुत अंदर है मेरे अंदर. I am like totally lost, bro. I know that. But यहाँ पर एक और अपने भाई आ रहे हैं, Chirag in the house. Bro, Chirag, seriously, man. यहाँ पर I wanted some Real Madrid perspective as well, by the way. We are hopefully going to have Shreyansh backstage में wait कर रहा था. मेरे rant डर के मेरे ख्याल से श्रेयांश ने पतली गली better सोचा है, he is gone, but don't worry, he'll come back. आता he just joined now. मैं सोचा कि यार Chirag, your video is a little bit lagging यार, मुझे लगता है. अब ठीक है? अभी थोड़ा better है, but you might want to go and come back if you don't mind. एक बार try कर वापस जाकर आने का. अभी भी हो रहा है थोड़ा बहुत. चलो श्रेयांश, सॉरी यार, मतलब I know that you have been waiting backstage, और कहीं ना कहीं मैंने डरा दिया होगा आपको, as well as a lot of people in the chat. But भाई वो जो अंदर वो खून खोलता है ना, literally, मतलब basically, मतलब I am someone just to share with you, श्रेयांश, by the way, big up यार, पहली बार आ रहे हैं ABFC पर, लेकिन हमने देखा है वो period as Chelsea fans, when we were basically Arsenal fans. मुझे मतलब पहले तो सोशल मीडिया नहीं होता था, गली में जाता था ना, where we used to have a few meetups about football fans and all that. तो भाई Arsenal fans used to tell me, and this is actual fact, bro. Chelsea, bhai, you're a bitch. That's what they used to say. ये होता था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, होता था. Late 90s or early 2000s होता था, up until we screwed the happiness in the Champions League. ठीक है? In the Champions League when they were so called invincibles. तो invincible season था, और वो we beat them in the Champions League and we eliminated them. Although we bottled ourselves, जो Arsenal करते आ रही है last 20 साल से, in the Champions League, semi-final against Monaco. And उस समय से change हुआ obviously after the Abramovich era and the Mourinho era. And I'm pretty sure you also know that part of history, right? अभी literally I am feeling deja vu यार, literally deja vu. और हमने जो भी किया है ना, ऐसे लग रहा है 20 साल में जो भी हमने, we have overpowered Arsenal, we have overpowered a lot of English clubs. Generally in Europe is, well, being a Real Madrid fan, you would respect the fact that how good Chelsea has been in Europe. ठीक है? True. And all of a sudden, Arsenal getting a Timber, a Declan Rice, as well as a Kai Havertz, and one of them from Chelsea, one of them being an ex-Chelsea player. How would you feel about it, and what do you think is the real truth there? Well, what is it? Well, I genuinely believe, and people might say otherwise, that Pep Guardiola has something to do with this. I don't know. See, for me, yeah, continue. एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे भैया? मैं वही बोल रहा था ना कि यार भाई, मतलब हमने जो पापड़ बेला है ना लास्ट 20-25 सालों से, और I know Arsenal have looked beautiful on the eye, but the bottom line is they have bottled from so many years. And now people like Declan Rice and Kai Havertz are, rejecting Bayern, Man City, for example, and going to Arsenal. I know पैसा बोलता है, but there is obviously a Pep factor there. Don't you think so, guys?
Yeah, I'll just simply say that last year Calvin Phillips की रेस में बहुत लोग थे, right? And he was one of the best products to come in the midfield, and वो जॉनर के players थे भी नहीं. But he chose Man City, and what happened? Tell me, na? He would have gotten more minutes at other clubs, I'll say. But he chose Real Madrid. उसके साथ हुआ ना यार, I'll just say that. And बाकी Declan Rice के लिए तो I'll say कि उसको गारंटी नहीं मिलेगी सिटी में. No player right now wants to play without guarantee. That is what I'll say. तो गारंटी क्यों नहीं मिलेगी, मेरा ये क्वेश्चन है. मतलब everyone in the chat, भाई, don't you think that Declan Rice, अब I know Kovacic is gone there, and मतलब वहां से कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट मेरा वही था यार, पता था जाने वाला है, लेकिन वो जब the way the announcement has happened ना, Kovacic basically खुद ही ऐसे एक्ट कर रहा है कि भाई ओ मेरा ड्रीम चला गया यार. मतलब I know होता है कहीं ना कहीं, I'm salty, it's quite obvious, but Kovacic, let's be honest, he's very good, but he's not world class, right? I don't think he walks into the team. Maybe after Gundogan, he might walk into the team. In City's team right now, he does. He does? I don't know. Let's see. Srinath बोल रहे हैं यहाँ पर, big up Ankit, love your content bro. Chelsea massive clear out underway. We are strengthening by destroying player power. Keep calm and trust Todd. देखिए, I agree on the points. Definitely Srinath, by the way, thanks a lot bro. Always supporting the channel for the super chat. Always helps. लेकिन यहाँ पर मैं agree करता हूँ on the fact that yes, we are destroying player power. And कहीं ना कहीं Kovacic, one of my favorite players, and we've discussed so much with Chirag over the multiple streams, and we all used to be like, Kova क्या खेलता है यार, we all remember. That is something that we all are commonly feeling exactly. That. But last say World Cup के बाद में things were clear that his motivation for this season was the World Cup and not Chelsea. ठीक है, और कहीं ना कहीं I see that player power thing, and where they are having their own priorities. Even for example, a Pulisic, you see a Pulisic, the way that he performs for US national team and the way he performs for Chelsea, there's like मतलब एकदम North Pole South Pole वाला difference है. ठीक है, कोई doubt ही नहीं है. Kai Havertz for Germany, Kai Havertz for Chelsea. So I'm just saying that easily. It's a clear thing that there is an issue about what they want to do for Chelsea, how motivated they are. But Srinath, my big question, and even Chirag and Shreyansh, my big question is, if you are a Chelsea fan, मतलब I agree that Man City ने भी दिया था अपने Gabriel Jesus और Sterling को to so-called rival clubs. But yeah, being Chelsea in the situation, we cannot do that, can we? Gabriel Jesus and Sterling were not मतलब their prime starters, right? Kovacic would be starting all our games. Correct. That is the point. And Sterling पे Pep had given up. Pep को पता था उसको cash out करना है. Even Jesus, he knew कि he needs a proper number 9 now. वो system change कर रहा है. So that is the reason he gave us. Chelsea अपने prime पे players दे रही है यार. Kovacic would have started anyhow. अगर हमारे पास striker नहीं है, Kai Havertz was also starting all the games for us. मैं तो rivals को कभी नहीं बेचता. I would have preferred sending players to Bayern rather, या फिर to any other club outside वो. और surely FFP का मामला है ना, मतलब Shreyansh, you know, right? La Liga में basically इतना सारा caps and all those. So I think that is the problem. By the way, people, Shreyansh is a Real Madrid fan, but obviously follows football end to end. तो Shreyansh, मतलब यहाँ पर there is news that Chelsea had to get rid of certain number of players before June 30th or July 1st. ठीक है? And बहुत लोग जो अपने opposition fans, again, much respect to everyone on the channel, and it's a fan channel for all to see. But a lot of people on the channel, used to tell me that basically वही है, मतलब not just me, every stream they used to say in every channel that it's about Chelsea doing something, मतलब कुछ गपला है with the Saudi truck coming and taking. अच्छा, वो सेम चीज बाय द वे, जस्ट टू ऑल नो, इंटर मिलान बारसा में भी होने वाला है, और वो हो रहा है. ठीक है, वो होने वाला है. इंटर मिलान बारसा भी चल रहा है. नो नॉट जस्ट इंटर मिलान, मतलब टॉक अबाउट रूबन नेवेस इन द सेम लीग, प्राइम पे बेच रहे हैं प्लेयर 55 मिलियन. सो इट्स नॉट जस्ट चेल्सी, राइट? इट्स अबाउट देम. तो और Real Madrid and Chelsea are two examples where we have bought players by paying a lot of money. Man City हम बात ही कर रहे हैं, तो हम just because it's a different league, I think it's double standards. I don't know what you think about it. So I would rather sell to them, and I know that Kai Havertz, for example, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं in the chat that he loves London, etc. But again, looking at a neutral perspective, अगर कोई cash cap होता है, plus the fact that you are having, say, a local club versus a club which is abroad or maybe elsewhere. If, say, for example, if you were a Kai Havertz or a Declan Rice, please give me a reason why would you not go to Bayern Munich and even Mason Mount? I don't think it's a good decision for Declan Rice to not go to Bayern, because Bayern is a top club. How can you say no to Bayern? English player, answer यही है.
Exactly, like English PL tax. Yeah, लेकिन definitely. नहीं, Yeah, I get that which family. English player you remember of a stature of a Declan Rice who is entering as मतलब 100 million के price tag वाला player has moved to outside Premier League. Let I me mean, the prime be very example honest. is Phil Foden, right? Phil Michael Foden, Owen was heads and shoulders above all the Declan Rices of the world. No. Heads and shoulders. Bia. PL money is right now at its peak. At this point, which player you can tell me will be ready to move out? नहीं, Jude लेकिन I Bellingham don't think went. salary will be that high, right? Salary का difference नहीं है. So if you're talking नहीं, about salary, Declan Rice, I no. understand the club Yeah, perspective. image rights. If when you are playing in the Premier League, you get better PR ads, you get better brands to endorse, you get better lifestyle. तो नहीं बोलूँगा, you will get a better lifestyle at PSG and Madrid as well. But just saying कि situations like these will prompt these kind of players. I mean, look at Phil Foden, bhai. Phil Foden is a starter for any club he signs, Yeah, and yet he but chooses to stay for City and be their second guy. Ki, okay, I'll just play whenever you want me to play, and if like Grealish fucks up, then I'll नहीं, come in. लेकिन श्रेयांश वही तो पॉइंट है ना, बिकॉज इट इज पेप ग्वार्डियोला. मतलब आई नो दैट यू आर टेलिंग अबाउट से द इंग्लिश टैक्स एंड द मनी पर्सपेक्टिव जो है ड्यूरिंग डेविड बेकहम, माइकल ओवन और इवन स्टीव मैकमैनमन, हु पीपल हु डू नॉट नो वाज वन एज एन वन ऑफ द लेजेंड्स फॉर रियल मैड्रिड, आई वुड से. एट द सेम टाइम यहाँ पर आपने, आई नो इट वाज नॉट अ स्टार्टर, लेकिन ओवन हारग्रीव्स कहीं ना कहीं बायर्न म्यूनिख बहुत ही जल्दी शुरू किया था. मतलब आई वुड लाइक टू से पीपल अगेन, आप लोग सोच रहे हो मे बी यार आई एम जस्ट नॉस्टैल्जिक. नहीं, मैं हेड्स एंड शोल्डर्स बोल रहा हूं. एनीवन कैन डिबेट, प्लीज डिबेट. Owen Hargreaves was at least 2 times the player that Declan Rice is. I genuinely believe. And Declan Rice is very good. Don't get me wrong. Declan Rice is awesome. He can become that player. Owen Hargreaves was that level of a player. Okay? He has played so many years, and even in England, he's done well. He's done well wherever called upon. Recently, Bellingham was an example. I know he moved from Birmingham at a very, very young age. Bellingham is a very different scene, I'll say, because at a very young age, he moved from a championship club to a top Bundesliga club. That was a very difference. And उसको Premier League time पे जितना मुझे remember है, he did not get a starting वाला option कि you will be starting and doing that. And Dortmund is a club जहाँ आपको development मिलती है and you will be sold to a. That is a very different situation, I'll say, with Bellingham. When you're talking about a established Declan Rice, he is the captain of the West Ham team. He is the vice captain of the English team, if I'm not wrong. मतलब he is one of the leaders, I'll say. अब तो वो एम्बापे ऑफ इंग्लैंड बन जाएगा यार ऑलरेडी. You know, if you know basically. अब इतना Bellingham and Declan Rice, bro, मतलब this is basically England midfield. Just think about it, what the price tag is. Just think about it. वो England midfield का, और प्लस मेसन माउंट का भी हो सकता है if he goes to Manchester United, which looks like it might happen. भाई अपडेट ये मेसन मिलने माउंट वाले का आप फेस टू पूछोगे फेस. ना, I have a very different rant about मेसन माउंट. मतलब प्लीज गो अहेड, बोलो. श्रेयांश ने फिल फोडन की बात करी, if I'm not wrong. Yeah. Phil Foden decided to stay at City despite knowing the fact कि उसको starting minutes नहीं मिलेंगे and तुम्हारी position में 100 million का player आया है. He decided to stay at City. He would have moved to any club. I'll just say he would have moved to any club. यार राइस के ऊपर तो अब हर चीज कह रहे हो ना यार, बहुत डिफरेंट PR चलेगा. But talking about Mount, तुम अपने बॉयहुड क्लब जो तुम कहते थे, जिसके लिए हमने तुम्हारे लिए टीफो बना दिया था. आई नो तुम्हारी बोर्ड से दिक्कत चल रही है, एवरीथिंग चल रही है. इफ तुम्हें इतनी दिक्कत है ना, कम आउट इन ओपन एंड से कि मुझे ये दिक्कतें हो रही थी बोर्ड से एंड दैट इज द रीजन आई एम लीविंग. तुम ट्रांसफर से पहले ही आके बता दो, नोबडी कैन होल्ड यू फ्रॉम गोइंग. चेल्सी के बोर्ड का स्टांस आई एम कंप्लीटली एग्रीइंग कि भाई अगर तू जा ही रहा है तो यू शुड बी सोल्ड इन अ वेरी गुड प्रॉफिट, बिकॉज माउंट जैसे कैलिबर का प्लेयर, द चेल्सी का प्लेयर ऑफ द सीजन व्हेन चेल्सी वन द चैंपियंस लीग एंड इन द वेरी नेक्स्ट सीजन आल्सो हम प्लेयर ऑफ द सीजन था हमारा. उस प्लेयर को तुम इतनी इजीली क्यों जाने दोगे when you can get maximum price out of it? तुम ना क्लब की इज्जत रख रहे हो, ना तुम खुद की इज्जत रख पा रहे हो, बिकॉज कोई चेल्सी फैन क्या माउंट को उस तरीके से देखेगा? I'll rather say Kovacic को we'll still appreciate if he comes to Stamford Bridge. We will give him an ovation or something if he performs good for and everything. नहीं भाई, अब तो मेरे तरफ से तो नहीं मिल रहा यार. मैं honest opinion दे रहा हूँ. Kovacic के लिए I'll still. And in my opinion, Kovacic will perform good for City because if the Guardiola deal goes आगे, then Guardiola and Kovacic together will be a very, very good pair to watch for. No, I completely agree. But they will complement each other a lot if they are both in the playing 11. Exactly. And both are ball carriers. Guardiola from the back and Kovacic from midfield. और आपके पास basically Rodri है, Stones है.
तो दैट विल वर्क कॉम्प्लीमेंट रियली वेल. लेकिन यार मेसी इज गुड. मैं थोड़ा कमेंट देने वाला भाई. सब लोग जो भी चैट पर है भाई, आई नो पहले 15-20 मिनट में मैंने इतना चैट हाईलाइट नहीं, मतलब read out नहीं किया, but I try to highlight as well as I've read a lot of comments. Big up to everyone in the chat. I know पहले 5 मिनट अगर आप देखे हो, नहीं देखो तो भाई देखना, because that is सच में जो दिल से आवाज निकली वही निकली है, तो देखना. श्रेयांश तो भाई मैं डरा दिया था, I know that, but big up to श्रेयांश and चिराग भाई. यहाँ पर मेसी गोड का कमेंट दे रहा हूँ, मैंने आपका कमेंट देखो. मेसी गोड, big up यार, thanks again always for supporting the channel. Questioning the Rice to Arsenal move in my opinion is a bit disrespectful. Let's leave history aside, but Arsenal have been one of the best teams this season, and them signing Rice's statement. Okay, before I go to the panel, Messi is good. Brighton has been one of the best teams in the season for me, the way that they are playing football. मतलब, what is your point? देखिए, I am not trying to disrespect anything. मैं वापस रिपीट करता हूँ. Yes, I know that Declan Rice has a certain level of leadership. कहीं ना कहीं आर्टेटा ने उसको सेल किया होगा प्रोजेक्ट that guys we are really close to a Premier League title. By being so close to Man City's, wow, जैसे लिवरपूल फेस की थी in 2019, we all remember that when they won the Champions League. The difference was Liverpool went on to win the Champions League. आर्सेनल ने क्या उखाड़ा है यूरोपा लीग में? घंटा उखाड़ा है लास्ट सीजन में. आर्सेनल ने क्या उखाड़ा है लास्ट 15 साल से? घंटा उखाड़ा है. आर्सेनल ने क्या उखाड़ा है लास्ट 20 सालों से? प्लीज टेल मी. अगर एक एफए कप उस पर आर्सेनल फैंस, आई नो लॉट ऑफ पीपल, आई लव देम ब्रो, ऑल द सब्स ऑफ आर्सेनल, एंड यू गाइस नो दैट आई एम जनरली नॉट एज सो, मतलब एकदम यू नो नॉर्थ पोल टाइप्स नहीं हूं मैं with respect to Arsenal and Chelsea. इस बार हूँ, क्योंकि for me to say that Arsenal attracted Declan Rice because of the way that they have been playing football in the last couple of years, I disagree. और मैं एक बहुत ही स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ. अगर कोई भी मैनेजर होता ना, I repeat, अगर कोई भी मैनेजर होता आर्सेनल का, with the kind of resources they have got in the last couple of years, they would have done what Arteta has done. They should have done what Arteta has done. I think Arteta कहीं ना कहीं he has got extra kind of, I know he's a good manager, don't get me wrong, but I think he's got like extra a cushion. Why? Because he was Pep's number 2. That's what I'm trying to say again and again and again. Pep has a pull which Sir Alex used to have, what a prime Jose Mourinho used to have. You know, that is what Pep has it. और वो चीज आर्टेटा पर लिंक होता है. I don't know what do you think about it, चिराग यार, ये वापस से जो हो रहा है about Declan Rice to Arsenal, जो मैं basically definitely I was like I'm expressing my shock. Yeah, I'll just say इसमें, see, Declan Rice moving out of West Ham is the obvious choice. मतलब he has to move out of it to move to a big six. आप कुछ भी बोलो, Arsenal is a part of a big six right now. They were the closest to pitching out City to the title. What do they miss right now? CDM. And if the Rice thinks कि मैं उस position में जाके I can make Arsenal the champions and I can fill the only hole that this team had, so why won't he go to a team? मेरा तो यही point of view है कि him moving I won't consider as a big no कि he is rejecting other clubs. But City, अगर आप इसी situation में लिवरपूल ले आते ना, trust me, Rice लिवरपूल जाता. Rice नहीं जाता वहाँ पे. लेकिन City के साथ problem है, they already have Rodri with them, who is the best in the league. Rather, he is best in the Europe at his position. नहीं, मेरा point है, did City really did they want Declan Rice enough? That is my question. I know it's easy for them. No, they didn't. The whole point of, मतलब यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा भाई, सब लोग जो भी यार चैट में बोल रहे, मैं अनफेयर हो रहा हूँ भाई. I don't know if you have seen Shreyansh. There is a English women, I think football player, I forget the name, if anyone can help me out. भाई Talksport में उन्होंने clearly बोला है blatantly, ठीक है, she is a proper English international, and she has said कि भाई it's very clear, and I have worked in the backdrop scenes में, Pep or City, what they have done in the entire deal saga ना, ये कहीं ना कहीं they have been in the bid because at the end of the day Arsenal as a club were hesitant to go to 100+ million in this case, और उन्होंने push किया है because Pep wanted Arteta and Arsenal to basically get him. They probably did not want a third club to come in and take Declan Rice, for example a Manchester United, for example even a Chelsea in the future. That is one thing, apart from a Bayern Munich, which is an ex-club of Pep himself. But what do you think about this part, Shreyansh, that what is the contribution of City in the entire thing? Because मुझे at any point लगा नहीं कि यार the fact that they really wanted Declan Rice. I still believe that they might come in, but things might change. But मुझे लगता है it's somewhere down the line that Arsenal have got that advantage, नहीं? Before commenting on this, I would like to add that Arsenal needs Rice as well. Like, they have been looking for a good, solid leader in the leadership, like in the locker room. Xhaka has been one of them, but as Chirag said, Rice has the experience, has been captaining West Ham, and I think Rice, as a person with a lot of experience and a leadership role in an Arsenal locker room,
will work a lot in a very good way. And the point where you say ki Pep basically entering the race because they wanted Arteta to have that title or have Rice. So I think it makes sense what you're saying. ये एक और पॉइंट है श्रेयांश, उससे पहले राइस का मेरे ख्याल से बीच में आए थे लिंक्स और एक दो, बट द मोमेंट सिटी का नाम आता है उसके अंदर एवरीवन गोज अवे एंड इट्स जस्ट आर्सेनल लेफ्ट देयर कि हां अगर बेसिकली पूरा जो चीज है ना जो सागा है वो एक्सेलरेट हो गया बिकॉज़ ऑफ दैट, हो गया. हां राइट, बिकॉज़ आर्सेनल हैड टू मूव, यू नो दैट सो कहीं ना कहीं दैट इज वन थिंग एंड आई जेन्युइनली बिलीव, और मैं नहीं अकेला बोल रहा, आई रिपीट, इट्स द इंग्लैंड इंटरनेशनल्स हु एक्चुअली couple of them have worked behind the scenes, they have said it, और उन्होंने बोला है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, I'm not making stories guys, go and watch TalkSport, I'm telling you, फ्री का पब्लिसिटी दे रहा हूँ मैं भाई. उससे याद आया, मैं भूल रहा हूँ, आई नो मैं रैंट मोड में हूँ थोड़ा भाई, यहाँ पर चेकआउट फुटबॉल मेडिको एंड नया चैनल है भाई, अपने भाइयों ने शुरू किया नया चैनल, दोनों ही चैनल्स नीचे linked in the description. If everyone can go and hit the subscribe button, not just to our channels but also their channels, it'll really help a lot. You know that they know stuff. मैं एक और पॉइंट पे बोलूंगा, I know we'll come to other transfers absolutely, लेकिन चिराग जो यहाँ पर श्रीनाथ बोल रहे हैं, दिस पार्ट आई गेट दैट, आई एक्चुअली would not say 50 million, but at the same time is he 100 million? No, but Messi's goat disagrees. मैं वापस से बोलता हूँ, is Declan Rice's motivation to move the fact that Arsenal are so exciting, जो young project है, plus Arteta being a young manager, that मतलब what should be the, I know it's personal opinion, लेकिन what should be the motivation of a player? One is guarantee that he starts, second is maybe plays the kind of football that he or she wants to play, or whatever, be it women's football में मैं बोलता हूँ generally, and as well as basically what is the role of that player. I'll just sum it up. I'll just tell you. Important task is in me. That's what I'm asking. Big question. Yeah. I'll tell you what the point is. He wants a move to top 6. That is a given thing. उसने West Ham को अपना promise करा होगा. I'll give you a trophy and everything. So that will be done. ठीक है? उसने बोल दिया, right? Top 6 जाना है. कौन सा top 6 इस टाइम पे आपको ले सकता है? Tell me. City talks में आई थी, they went off. United can take you, but क्या वो 100 million invest करेंगे? Not at all. West Ham at least not till the new owners come. Yes. Yeah, exactly. ठीक है? Chelsea cannot, and Chelsea have just done a 100 million midfielder signing in form of Enzo. आपने मना कर दिया, मैं बॉक्स टू बॉक्स ही खेलूंगा, मैं CDM नहीं खेलूंगा. ठीक है? That is a fact. उसके बाद third point comes is your wo. Which club? Liverpool. Liverpool will never invest 100 million to any player. हाँ, इसलिए मगर Valverde और Mbappe तो नहीं होने वाला वो. हाँ, Valverde that's clickbait. उसके बाद which other? Tottenham. You are not going in Tottenham. They are not in the best position right now. Who's the other club left? Who's the sixth club? कौन सा भूल गया मैं? Chelsea. Yeah, that's Arsenal. That's नहीं Chelsea बता दिया ना. Chelsea Enzo को ले आई for 100 million. नहीं तो that is why ना देखो अब we are ready to invest. I know that कहीं ना कहीं we are not even in the conversation. Why? Because भाई short term memory loss, हम लोग भूल जाते हैं what is Chelsea really. एक साल हो गया भाई, सब बोल रहे हैं मेसन माउंट शेड ये वो, एब्सोल्युटली भाई नो वन प्लेड वेल इन चेल्सी एंटायर ईयर एंड वी हैव बीन शिट, अग्रीड. लेकिन आप अगर बोल रहे हो चैंपियंस लीग फुटबॉल इज बेसिकली अ मोटिवेशन, तो मैं आई वुड लाइक टू काउंटर दैट सेइंग दैट no it's not a motivation. It's not motivation. लेट मी कंप्लीट. चला मेरा पॉइंट ये है, अगर बाय चांस, so that is one of the motivations what a lot of people are saying, that's why Chelsea are not in the conversation compared to Arsenal in this case. I think अगर एंजो के बगल में अगर डेक्लन खेलता, दैट इज द आइडियल सिचुएशन, दैट एग्जैक्टली द प्लेयर व्हाट वी वांट. ठीक है, अगर आप बोल रहे हो चैंपियंस लीग इज वन स्टेप अहेड ऑफ चेल्सी एंड जनरली द प्रोजेक्ट ऑफ आर्सेनल इज मोर, भाई अगेन मैं रिपीट करता हूँ, चैंपियंस लीग में खेलना यू इज व्हाट यू वांट. और लेट्स बी रियल, अगर आप लोग के पास 100 रुपए, सब लोग के पास चैट में और पैनल में, अगर कल नहीं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर आर्सेनल और चेल्सी दोनों खेल रही चैंपियंस लीग में, ट्रस्ट मी, अगर 100 लोग में से अगर 20 लोग भी बोलते हैं ना कि आर्सेनल का ज्यादा चांस है चैंपियंस लीग जीतने का, मैं बोलता हूँ घंटा. ठीक है, चैंपियंस लीग भाई यूरोपियन फुटबॉल में चेल्सी हैज अ पेडिग्री दैट आर्सेनल विल नॉट बी इक्वेटिंग एनी टाइम सून. आई एम राइटिंग एंड गिविंग यू, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एब्सोल्युटली नहीं होने वाला. तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि खाली चैंपियंस लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, देन व्हाट इज द पॉइंट? No, Champions League is not the only motivation I'll say for Declan Rice. No, the point here is Chelsea में जो अदर बात आई थी ना कि Chelsea क्यों नहीं आ रहा, he has made clear कि उसको बॉक्स टू बॉक्स खेलना. उसने बोला मैं CDM नहीं खेलूंगा. First of all, thank you so much Clifford भैया. Thank you so much Ankit भैया as well for helping us out in this. I hope you guys actually love it. And भैया talking about Declan Rice,
उसने बोला मुझे बॉक्स टू बॉक्स ही खेलना, आई विल नेवर प्ले सीडीएम। उसने ये इंटरव्यू में बोला, आई डोंट वांट टू प्ले सीडीएम। और वो सीडीएम नहीं खेलना तो चेल्सी में वो फिट ही नहीं करेगा, व्हाई विल यू गो फॉर हिम? ओके, आई पुट द क्वेश्चन टू श्रेयांश। श्रेयांश, आर्सेनल में दे हैव लॉस्ट गणेश जाका, जॉर्जिनियो का स्टेटमेंट है कि वो रहेगा, ठीक है। वहां पर काई हावर्ट्स आ गया। काई हावर्ट्स के लिए भाई बंदों ने दिया है 70 मिलियन ऑल पुट टुगेदर, ठीक है। आई नो रियल मैड्रिड वाज इन द कन्वर्सेशन बट दे डिडंट वांट टू शेयर आउट सो मच मनी व्हिच इज क्वाइट फेयर। As much as I love Kai Havertz, not anymore, ठीक है। The fact is that अब Kai Havertz के लिए इतना दिया है, ठीक है, Declan Rice के लिए इतना दे रहे, pretty sure they are starting. I don't think either of them will be happy remaining on the bench. अगर Kai Havertz Chelsea से Arsenal जा रहा है after the club pays 65 million still does not start, there's a big question mark in the entire Edu वाला propaganda, ठीक है। अगर जा रहा है Kai Havertz, then definitely Odegaard also plays. Being a Real Madrid fan, you would know the kind of improvement that he's had. Definitely. ओडेगार्ड खेल रहा है, काई हावर्ट्स खेल रहा है, विंगर साका और मार्टिनेली / ट्रोसार्ड खेल रहे हैं। तो बचा कौन भाई? एक ही मिडफील्डर, डेक्लन राइस, ठीक है। And he has to play CDM. Exactly, he cannot play box to box. He has to play proper CDM. Who's the other midfielder you played? No one. They go 4-1-4-1. That is the only option they have. Or a 3-2-4-1. No. They will start Jorginho. Correct बोला ना? They'll start Jorginho. They'll start Jorginho के साथ। तो Jorginho Declan Rice double pivot. You're forgetting the Arsenal का main midfielder. बोलो CDM. क्या continue? Party is leaving यार। खत्म ना हो। हाँ, पार्टी तो लीव कर रहा है definitely अब तो। So it's Jorginho and Declan Rice. Odegaard as the number 10. ठीक है। Havertz as the false 9, number 9, 10.5. Okay, so you are saying. Yeah. उसने बोल दिया his versatility is the main point. जो Kai Havertz की versatility है ना, that is the reason he is playing. I am not starting Jesus and Havertz will rotate depending upon the game they are playing. If they want a focal point up top, they will go with Havertz because nobody can head balls very perfectly for them. Although उन्हें नहीं पता, Havertz भी नहीं कर सकता, उसके भी बस की नहीं है. Although they are putting him in that for that position. And आप साका की बात करोगे in case कि साका क्या कर रहा है? साका क्या करेगा? साका will be the main man who will be scoring goals. They are moving to the Liverpool type of a system, जहाँ पे साला is the main guy या फिर माने is the main guy to score goals. नहीं मतलब I get your point. एक फंडा ये है, देखिए मतलब I know Arteta ने भी बोला about Kai Havertz, the statement is given that basically he has it in him, it's just that we need to basically unleash him etc. लेकिन if I am Gabriel Jesus, if I know Ankit तो already छोटा है, in case अगर back 3 हो जाए, then either your Trossard can play wing back. 3-4 वही तो बोला, 3-2-4-1 they could go. हाँ, 3-2-4-1. तो Trossard can play the wing back position. आपका लेफ्ट बैक वैसे ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी. जिंचेंको played beautifully, लेकिन he wasn't the most reliable player defensively. And आपके पास 3 ऐसे सेंटर बैक्स हैं who are ready to start in any team. Ben White, Saliba and Gabriel. And they have good backups as well. अब तो वो उसको भी लेके आ रहे हैं, टिम्बर को, right? तो टिम्बर will be starting the game. आपके 2 मिडफील्डर्स हो गए, डेक्लन राइस एंड जॉर्जिनियो इज द सीडीएम काइंड ऑफ अ प्लेयर जो बैकलाइन के आगे बैठेगा. राइस विल कैरी योर बॉल. नाउ यू हैव ऑप्शन फॉर 3-2. एक साइड तो ट्रोसार्ड हो गया विंग बैक में. देन योर 4 बिकम्स ओडेगार्ड. यू कैन इवन पुट इन हावर्ट्स एंड जीसस अप टॉप, या साका को आप राइट विंग बैक खिला दो. ईदर इफ यू डोंट वांट टू कि साका विंग बैक खेले, आपको एक राइट विंग बैक खिला के जो आप लेके आओगे उसको खिला लो एंड यू कैन ड्रॉप इजीली. तो आप कर सकते हो. काय को रोटेशनली बहुत अच्छा. I would like to also question the midfield. I know Declan Rice अगर बॉक्स टू बॉक्स और जॉर्जिनियो kind of मतलब on paper it looks fine, but भाई चिराग हमने देखा जॉर्जिनियो at times the kind of I rather मतलब सच में बोलूं a Zinchenko or a Declan Rice in midfield, and Zinchenko can play that role by the way for all people. Yeah, Zinchenko can play the CDM. 3-2-4-1 में that suits better. मतलब I hear you, लेकिन उसमें Gabriel Jesus has to basically play out. क्योंकि आई डोंट थिंक कहीं ना कहीं लोग बोल रहे रोटेशनल रोल. भाई अगर काई रोटेशनल रोल के लिए जा रहा है, तब चेल्सी से आर्सेनल जाना इज नॉट अ नॉर्मल, इट्स जस्ट नॉट अ चलो भाई चाहते हैं आर्सेनल. दैट टू फॉर 70 मिलियन फॉर रोटेशनल रोल. Plus Chelsea to Arsenal rivalry. I don't think he'll go for that. And exactly my point is कि चेल्सी में ना, अगर आप चेल्सी में हो इस टाइम पे, you all know आप चेल्सी में हो, चेल्सी में आपको ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट दिख रहा है या वहाँ पे? चेल्सी में तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है ना. देखो, that is one more point, right? If I give you having a manager who's not joined, why the hurry? No, he must have conveyed that. Trust me, Pochettino has conveyed to Havertz that he's not the part of the plans. And बोर्ड पे भी प्रेशर होगा, because if Arsenal ने बोल दिया कि हम तुम्हें 70 मिलियन या 65 मिलियन दे रहे हैं,
for a player जो तुम खुद 75 million में लाए थे, is just 2 years left in his contract, तुम्हें उसके लिए अगर 70 million मिल रहे हैं, you will rush on to that thing, क्योंकि आपको पता है आपके पीछे FFP भाग रहा है, everybody knows चेल्सी के पीछे FFP भाग रहा है, and Chelsea right now wants players जो फेम बना सकते हैं, जो हाईलाइट कर सकते हैं चेल्सी ब्रांड को. सपोज हम माइनान के पीछे जा रहे हैं, कल न्यूज क्या थी कि हम माइनान के पीछे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज वो फ्रांस का नंबर 1 है राइट नाउ. ही विल बिकम अ नंबर 1 इफ ही इज नॉट द नंबर 1. वो स्टार्ट करेगा फ्रांस के लिए एवरी गेम. दैट इज द रीजन वी वांट माइनान नाउ. हम ऐसे प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं. क्या जर्मनी का बेस्ट प्लेयर हैवर्ट्ज है? जर्मनी का फर्स्ट नेम क्या हैवर्ट्ज है? ही इज द बेस्ट प्रॉमिस एट बेस्ट. प्रॉमिस भी 24 साल की उम्र में कोई नहीं रहता. प्रॉमिस इज एट एज ऑफ 21 and 22 आई विल से. नहीं मतलब प्रॉमिस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यू कैन ओनली आर्गुमेंट ये कि नॉट बीन प्लेड इन हिज बेस्ट पोजीशन, be it even internationally at times. But Havertz for Germany has been, like, what I have seen is Havertz for Germany is really, really good. Much better, at least. Much better. वो better है. I'll say on that. And जब last वो game खेला internationally, he was magical off the bench. यार अतरिंदर में तेरा कमेंट पढ़ रहा था. I'll just say इसमें midfield में ओडे and डेक्लन cannot do all the running work because mostly जो midfields खेलती हैं play with the midfield 3. तो मार्टिनेली को तू ओडेगार्ड और डेक्लन राइस को बोलेगा कि इतना भागो, दैट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर देम कि वो 3 मैन मिडफील्ड को काउंटर कर पाए विद अ 4-4-2. यू नीड नंबर्स इन द मिडिल. इससे नंबर्स इन द मिडिल बहुत कम हो गए. दैट इज आई एग्री विद सीएससी उत्कर्ष. जो 3-2-4-1 इज क्वाइट प्रैक्टिकल, क्योंकि वो अगेन पेप का नंबर 2 है भाई आर्टेटा. दैट्स वन मोर रीजन. हां एंड भैया 3-2-4-1 में आपको अगर आप जिनचेंको खिला रहे हो ना, यू गेट द वर्सेटिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग इनटू अ बैक फोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. Correct. I think Zinchenko moves as a fullback, and Declan Rice and Odegaard can also a bit sit back. 4-2 पे आ गया आप, मतलब sort of, या 5-2 पे आ गया, अब कर सकते हो ये. नहीं, I get that point. तो eventually मतलब it looks very good on paper, absolutely. लेकिन वही है, Gabriel Jesus, how will Arteta, like देखो, Pep keeping players happy is a different thing versus Arteta keeping players happy. I repeat, भाई Arsenal fans आपको बुरा माना तो मानो, भाई आप 7 साल से नहीं हुए भाई चैंपियंस लीग में फुटबॉल में, तो इट्स अ न्यू थिंग. आर्टेटा इज अ वेरी यंग मैनेजर अभी. आई नो दैट he's had a great start. मतलब people might laugh at me because recency bias होता है, बट भाई मैं बोलना चाहूँगा in the very first year there are a lot of XYZ managers जो बहुत अच्छा रहे in the first couple of years. और मैं वापस से बोलता हूँ, people might disagree, भाई आर्टेटा की जगह एमरी होता ना, Arsenal would have already played Champions League last year, and I genuinely believe it. ठीक है, आई एम नॉट इवन जोकिंग वहाँ पर. लेकिन श्रेयांश थोड़ा बहुत, आई नो विल कम बैक टू आर्सेनल ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स मैन सिटी की वहाँ बात कर ही रहे. तो श्रेयांश, व्हाट अबाउट रियल मैड्रिड ब्रो? क्या हो क्या रहा है? हाउ आर यू अलाउइंग हैरी केन टू गो टू बायर्न म्यूनिख? लुक्स लाइक इट, आई नो. I think, see, what I noticed was हैरी केन रियल चल रहा था. देन एक पुराने एक्स की तरह एम्बापे का नाम वापस आता है, एंड रियल हैरी केन की रेस से का नाम भी लिंक्स ही मिट जाते हैं. So, and again we are hearing news that PSG has now told Kylian Mbappe कि भाई this summer you have to go. So I don't know, maybe Real is waiting for Mbappe, still waiting for Mbappe, but we have signed a lone striker, Joselu, and I think it's a good Joselu is not a starting striker, right? That's for sure. We are waiting for Mbappe to join us, I think still. तो अभी भी बोल दिया ना, Mbappe looks likely. What are you saying? Mbappe looks the most likely according to you, is it, Shreyansh? Yeah. I mean, that's the only way it makes sense to me to not cash in on Harry Kane. यार हैरी केन तुम्हें नहीं मिल रहा. हैरी केन, you are not getting. अब तो नहीं. I don't think we're interested in him as well. Yeah, Harry Kane won't come to move any club out of England. That is a given fact. No. Harry Kane is being really strongly linked with Bayern, no? Yeah, but he won't move. Trust me on that. I'm telling you, वो नहीं जाएगा. Yeah. पहली बार डैनियल लेविस को इंग्लैंड में बेचेगा नहीं, और वो बाहर जाएगा नहीं. That is the situation. मेरा फंडा अलग है चिराग. मुझे क्या लगता है ना, मतलब I don't know what you guys think about it in the chat. Or by the way, yes, we are coming to all the other players that we are also supposed to be discussing as well as clubs. भाई अगर हैरी केन अभी आता ना, देखिए मतलब if I'm not wrong, हैरी केन is just 30 or turning 30 if I'm not wrong. Yeah, 29. जो भी है. तो now if he comes and then I would say एकदम top elite level striker जो है ना, you can get a couple of years of Harry Kane. I think eventually one of Mbappe, Haaland was anyway going to come to Real Madrid, one of them at least, if not Haaland, definitely Mbappe. And I think the smarter thing would have been that, I know Mbappe तो would like to leave PSG at some point. He doesn't want to extend क्योंकि वो बहुत difficult कर देते हैं deals. I know सास बहू का जो होता है हर window में.
Lekin I think because PSG also is not foolish enough to let him go on a free. I think the smarter thing would have been that he extended there. Maybe because Neymar ka abhi bhi ek saal baki hai with Luis Enrique coming in, played there one more year, and then maybe. But meanwhile, Real Madrid get a Harry Kane, and by the second year of Harry Kane, where he might not want to get every match start में जैसे माइकल ओवन की बात कर रहे थे हम, he could become that role in the future with Mbappe coming in. I think वो ज़्यादा स्मूथ होता है in my personal opinion compared to अगर by chance अभी Mbappe मिस कर जाए. I know अभी भी यार Real Madrid है, they'll get Mbappe probably yes. लेकिन 200 million is a lot of bucks bro. Come on, let's be real. तो वो अगर by chance मिस कर जाए इस विंडो में जो हुआ in the last couple of windows also you can argue. Yeah. I don't think you're going for another young striker like for example a Kolo Muani or a Osimhen. मतलब that would say no to Mbappe finally, right? Yeah, exactly. I agree on that. अगर आपने कोलो मुआनी या फिर वो साइन कर लिया, that means Mbappe is not coming because कोलो मुआनी is at that point of his stage या फिर some other striker might be coming for starting minutes. That is a given fact. Although I know it is Real Madrid की they know कि but अगर तुम Mbappe का बैकअप हो ना, Mbappe does not take rest. Mbappe रेस्ट नहीं होता है. मतलब he is the Haaland kind of person. जिसको अरे वो है भी क्या यार उनकी एज, these are in their early 20s यार both of them. उनको इस टाइम पे इतने रेस्ट नहीं चाहिए होता. विनीशियस इज नॉट रेस्टिंग, नीदर इज रॉड्रिगो, एंड वो विंगर्स है भी नहीं. कोलो मुआनी कैन स्टिल प्ले ऑन द राइट बट ही इज स्टिल नॉट द पर्सन. This is where I felt Kolo Muani was in my personal opinion, to be honest, I preferred Kolo Muani over Harry Kane. I know that's a very cheap thing to say, but Kolo Muani also plays as a right winger, something that has been missing from Real since past I don't know how many seasons. Real needs a right winger, a proper right winger. We cannot Rodrigo, still play Federico Valverde. Rodrigo is not a right winger. Rodrigo, do you know Rodrigo prefers to play at left? Left, exactly. जैसे हमने मतलब बात कर रहे हैं. It's completely भाई पुलिसिक वाला केस है यार चिराग. जो But we have पुलिसिक Vinicius. नेचुरल है ना वो उल्टा खेलता है, वो इसलिए नाखुश है. Vinicius is not resting at all. No way we are resting Vinicius over Rodrigo. But I'm saying Rodrigo still prefers to be a left winger than a right winger, and that's why we need a proper person who can play as a right winger. And that's where Kolo Muani was a great fit for me, where he played right winger and as a striker as well. Wide forward. He's like a young Higuain. If you know, if people follow Higuain at Real Madrid, जब वो खेलता था Real Madrid के लिए, Higuain was a similar kind of player. He used to be a wide forward. He should not be like जैसे Cavani at Napoli. Basically, that is what Kolo Muani looks like. He's not like a person who's like a out and out like only center forward वाला चीज, which I agree कहीं ना कहीं. लेकिन वही है ना, Kolo Muani को आप let's be real, मतलब आप एम्बापे कोलो मुआनी का कंपेयर नहीं कर सकते अभी भी, because एम्बापे has proven it, although very young, has proven it for last 4 seasons. यहाँ पर बंदा किया just for 1 or 2 seasons at max. No, there's a massive difference. Exactly. रियाल को प्लेयर चाहिए, but my point was कि रियाल के ओनर ने या फिर whatever you call पेरेस, उसने आके बोल दिया कि we are not making any signings this season, we are done with the transfer window, right? But एम्बापे न्यूज़ आई तो things started flowing in कि रियाल will go for it. If in case Mbappe नहीं आ रहा था तो Real was done with their window, so they must have a plan for something कि वो without striker खेल रहे हैं या वो Rodrigo को खिला रहे हैं या they are over trusting Joselu या they have some other plans as the false nine जिसको वो खिलाना चाहते हैं. फर्मिनो भी गया अब तो सऊदी, वो भी ऑप्शन नहीं है बचा. फर्मिनो जा रहा सऊदी. हाँ, he is going to Saudi. तो जब हैवर्ट्स गया, फर्मिनो के वो बैकअप ऑप्शंस यही सब थे, if I'm not wrong. यही सब थे. That is the point. And आप Rodrigo क्यों नहीं खिलाओगे? रॉड्रिगो भी तो खेल ही रहा था. जो न्यूज़ है भाई, न्यूज़ क्या है बेसिकली फॉर एवरीवन इन द चैट, आप लोग पता नहीं आप लोग ने पढ़ा है कि नहीं, आई नो कहीं ना कहीं यू नीड टू टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन द फैक्ट इज if say for example Mbappe comes to Real Madrid, Rodrigo is not happy because Rodrigo sees himself as a forward as in a proper two man forward wala cheez or just behind the striker wala cheez, so he tactically will not be happy. Plus PSG on the other end are demanding Thibaut Courtois in return. नहीं. No way we are selling Courtois to PS. And just be आप लोग कंटिन्यू करो. I'll be moving off. मेरा फुटबॉल मेडिको पे लाइव है अभी. हाँ भाई सब लोग अगेन बिग अप टू चिराग यार फॉर कमिंग ऑन शॉर्ट नोटिस अगेन. भाई सब लोग अगर चेकआउट फुटबॉल मेडिको एज वेल एज द न्यू चैनल ऑफ श्रेयांश एंड चिराग यार, दोनों ही चैनल्स लिंक्ड है बिलो. भाई मिलते हैं जल्दी से, अभी रैंट खत्म नहीं हुआ है चिराग. हाँ मैं अपने थोड़ा सा और रैंट करके आता हूँ. बिल्कुल see you श्रेयांश, मिलते हैं. चलो थोड़ा बहुत हम और करेंगे गाइस. एवरीवन आई हैव स्टार्ट अ फ्यू मोर कमेंट्स, सो आई विल स्टिक अराउंड फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स. और अगेन थैंक्स फॉर श्रेयांश ऑल्सो यार, आज दोनों भाई. बाय द वे फॉर पीपल हु मिस्ड आउट, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स भी चेकआउट करिए. वहाँ पर एक बढ़िया क्विज हुआ, वहाँ पर श्रेयांश एंड Chirag Uday. I have not tell you the result because people might not have watched it here, but that was one of the best episodes that at least I have hosted for sure.
And thanks to the contestants and of course people who have joined. So do check it out later on. लेकिन Darren missed my rant, but कोई नहीं Darren यार, you can rant it out in the stream as well if you want. But भाई देखिए यार, bottom line ये है कि Real Madrid, I can still expect that if say for example if say a Chelsea or a Manchester United for example जिसकी हम बात करेंगे as well, or even a PSG lose out to a Real Madrid, I can get it. But the rant etc came because Chelsea lost out not to Man City even but to Arsenal, bro. I'm just saying it out there. But coming back to Real Madrid, तो अभी क्या लग रहा है, मतलब अगर no Mbappe, what is the realistic plan B? You need to have a plan B, right? Don't you? You cannot have all the eggs in one basket. We are banking Joselu कि हमारा अच्छा खासा लोन स्पेल चलेगा उसका, and next year we go back to the race of Mbappe. अच्छा, राइट बैक में आई थिंक यू हैव टोबियास को आपने एक्सटेंड कर दिया है. Tobias is a very very brilliant young aspect for us. I was expecting him to be included in the squad last year as well, and like the same way Xavi did for Balde, I was expecting the same thing to happen for us with Carvajal and Tobias, but that did not happen. But yeah, so I am hoping this season that will happen, and that's why we're not going for an RB. And for left back, we have a Fran Garcia back, so that's a very good deal. I think Fran Garcia is amazing. If you have seen him play, Nacho is extended for one more year, I believe. Yeah, Nacho is staying, and ठीक है, मतलब Mendy, even if he goes, I think you'll be okay because David Alaba is always there, right? So that's how it is. But कोई नहीं भाई, again तो रियल मैड्रिड का बात करना था before Shreyansh goes, but just letting you know before you go Shreyansh, I think you have a Castilla में आपका एक सेंटर बैक है who is expecting to be promoted. I miss the name यार, कोई किसी को याद है क्या नाम, जो सेंटर बैक है 21-year-old in Real Madrid, Castilla, he's a player, right-footed centre half of Spain. So he is someone that Chelsea are going for. So Chelsea fans, watch out for him. I missed the name, मैंने उसके बारे में tweet किया था, but check out. But that is something we're going. But again, thanks to Shreyansh here. Again, not just to participate in the Almighty Sports Cricket Quiz, but also here to come on short notice and speak and झेलोफy my rant here. But मिलते जल्दी से. Again, do not forget to check out Shreyansh और Chirag का नया channel. Again, it's linked below in the chat. See you soon, bro. Again, हमारा तो transition season है, तो I would just say all the best because Barca. Thank you. We need it. I hope we win the La Liga this season. And let's see. Bye. Take care, bro. See you soon. Bye, everyone in the house. I'm going to take a few more comments, and yes, I am going to come to other news as well. Maddison almost done. He's going to Spurs. What's your thoughts? Bye. देखिए, Maddison, as much as the guy is good, he's brilliant. He's a super free kick taker. But Leicester is Leicester. I know Spurs is Spurs, but कहीं ना कहीं we all, जितना भी मैं कहाँ बैंटर करूँ स्पर्स को, कहीं ना कहीं स्पर्स के एम्बिशंस अलग है विद रिस्पेक्ट टू लेस्टर. तो आई गेट दैट, लेकिन इज ही ब्रिंगिंग द वर्क रेट, द टेनासिटी जो आपको चाहिए एक नंबर 10? आजकल का नंबर 10 नहीं होता खाली. आजकल का नंबर 10/10/8 होता है. मैडिसन इज दैट, बट इज ही गुड इनफ टू डू द नंबर 8 जॉब? दैट इज माय बिग क्वेश्चन. एक क्रिएटिविटी जो मिसिंग थी स्पर्स में, दैट ही विल गेट. बेंटनकर एंड हॉयबर्ग वर ब्रिलियंट टेनासिटी में, लेकिन क्रिएटिविटी, गोल स्कोरिंग नॉट बैड रिसेंटली, लेकिन उनका एक क्रिएटिविटी मिसिंग थी फ्रॉम मिडफील्ड एरियाज. वो मैडिसन लाएगा, बट will he drop enough? Will he do Eriksen what Eriksen used to do at Spurs? I personally doubt it. But of course मैं खुद बोला हूँ that I would happily take him at Chelsea because हमें चाहिए था एक player, because हमने एक साथ देखिए all the rant etc जो आप लोग ने देखा है, main reason ये है because all of a sudden we have lost our entire midfield. Half of that has gone to our rivals directly, and that's the whole point. ठीक है, तो Maddison is, you can say, a miss for a lot of clubs like Newcastle and Chelsea were also interested. लेकिन वहीं पर मैं पूछना चाहता हूँ Chelsea fans, by Gabri Veiga, is it meaning that Gabri Veiga, we are confident that Gabri Veiga और Caicedo अगर आ जाते, that will be a very tenacious midfield with Enzo, Gabri Veiga और Caicedo? आप लोग बोलिए if that makes sense. नहीं तो हमारे पास plan B क्या है? Now that Declan Rice is going to Arsenal, is a plan B Romeo Lavia? Is Romeo Lavia और Gabri Veiga good enough to start at Chelsea? इन माई पर्सनल ओपिनियन बहुत अच्छे प्लेयर्स है, बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर्स है, बट जुरी इज आउट. कहीं ना कहीं हम वही 20-21 साल के बंदों को इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी देने का सोच रहे, which already we have given to Enzo, and I feel it's unfair, and that is what I'm saying. I'm complaining with the Chelsea board. I'm not being biased against my opposition clubs. यहाँ पर क्लियरली मैं बोल रहा हूँ I'm against my own board. Absolutely. उन्होंने खेला है FIFA mode manager for 2 seasons, and now they're continuing that, and that cannot happen this time. Unfortunately, we have to go with Caicedo big money, और वो जाना पड़ेगा. And
मे बी सोबोसलाई का 2 दिन बाकी है इन द रिलीज क्लॉज का है 70 million euros. Guys, what do you think? Should we go for Soboslai for 70 million euros or we should invest in a Gabri Veiga जो 40 million euros का रिलीज क्लॉज है? Again, मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा ये है, Soboslai is a better player, he's a more proven player, he's a better leader. हमें चाहिए वो मिडफील्ड में. We have to replace a Mason Mount if he goes to Manchester United, which looks likely even अभी. ठीक है, तो वहां पर we need someone like a Soboslai rather than a Gabri Veiga who's brilliant, who might be better than Soboslai in the long run. Soboslai थोड़ा सा I would say ज्यादा tenacious है, ज्यादा basically someone who has more legs. For Premier League मुझे लगता है Soboslai अभी ज्यादा ready है compared to what Gabri Veiga might become eventually. That's what I'm saying. Or would you just go with happy with Caicedo or Romeo Lavia? And that's a conversation for sure. अगर Caicedo नहीं आता, do you think plan B would be Kessie? देखिए Kessie का न्यूज मैं देख रहा हूँ. I don't see that. I am a Milan fan as well, for people who do not know. Why Kessie is a very good player, लेकिन Kessie plays well in a 4-3-3-3 4-3-3 भाई, why did I do bowling 4-3-3, वहां पर वो अच्छा प्लेयर है. Will we go a natural 4-3-3? I don't think so. Or is Kessie creative enough to play that Soboslai kind of role जो मैं समझाने की कोशिश कर, जो Gabri Veiga खेल सकता है? Will he do that? I don't think so. Honest opinion बोल रहा हूँ. He's someone who can get in the box. He's not too bad. लेकिन is he a creator? Is he someone who is a capable player for the Premier League to be playing in a 4-2-3-1 proper? He's good enough, but not the best. He's not the best. अगर आप बोल रहे हो, अगर we lose out, that is Chelsea, if we lose out to a Liverpool, ठीक है, on a Gabri Veiga, a Newcastle, on a Soboslai, and if Chelsea get Kessie, and as much as I like Kessie, as much as I like Milan, we are getting the worst deal out of the three. That's a fact. Honest opinion. I know Kessie और Soboslai दोनों लाते थोड़ा बहुत experience compared to Gabri Veiga, but compared to Soboslai, I think मैं नहीं जा सकता Kessie के साथ just because I like Milan. No, that's not the thing. अच्छा है, लेकिन I don't think it's that level in my personal opinion. But Rafa Marin is the guy. Thanks, bro. Anushil, big up, yaar. Thanks a lot. भाई सब लोग chat OP यार. I know यहाँ पर people are dropping like 9 pins because हमें तो घंटा आता है भाई. हमें तो घंटा आता है. घंटा gang. Let's hit that like button. Come on, let's get in the likes, guys. एक automatic tweet जो आता है, if you can retweet that along with this link, brilliant. Let me now give a shout out to each and everyone and on our own channels all the time. You know that I love you. It's a fan channel for all to see. If you guys really believe it, and we are coming live after 3 days, अगर आपको सुनने का मन है, definitely hit that like button. Everyone, anyone who not hit that like button, बिंदास feedback दीजिए on the comment section. मैं unfair हूँ, लेकिन आपका feedback है, मैं लूंगा absolutely. ठीक है, hit that like button, guys. Come on, guys, let's like, share and subscribe. Absolutely, it's Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और हमें तो घंटा आता है भाई 25 सालों से, बट कूप माइनस चाहिए नहीं यार. देखिए अगेन कैसी टाइप में बोलूंगा, कूप माइनस लेफ्ट फुटर, सेट पीसेस में बेटर है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन is he that kind of tenacity? Is he that kind of जो आपका एक वर्क रेट चाहिए, जो आपको एक इंडस्ट्री चाहिए, जो आपको एक फिजिकलिटी चाहिए, entire combination. He's good at playmaking, he's good at his left foot, but transitions में again the Chelsea get beaten. Koop Miners is not the best guy. Dutch football fans are talking about it. He's good, but he's not a starter for a club who's wanting to get back to top 4 and we belong there. Let's be real about it. मेरे को लगा मैडर्स वांटेड टू यूसीएल फुटबॉल रिस्पेक्टफुली, व्हाट डज टॉटनहम हैव टू ऑफर. भाई देखिए अगेन मैं आता हूं, जो आप लोग रैंट नहीं सुन रहे हो ना, मेरा पॉइंट यही था आज के दिन में, व्हाट इज द ब्लडी मोटिवेशन दैट दिस प्लेयर्स हैव? इज इट अ गुड एनवायरनमेंट, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, और इज इट द फैक्ट दैट यू प्ले सेक्सी फुटबॉल, और इज द फैक्ट दैट आपको मिलेगा ज्यादा सोशल मीडिया कवरेज और आपको मिलेगा ज्यादा स्टार्ट्स? आई डोंट नो. मतलब बैक इन द डे ऑलवेज द फर्स्ट क्राइटेरिया वुड बी व्हाट? The first criteria would be that अगर मुझे खेलने को मिल रहा है, मुझे जीतना है. हम सब फुटबॉल खेलते हैं, हम सब स्पोर्ट्स खेलते हैं, देखते हैं, राइट? Why? Because of, yes, we are all glory hunters, whether we like it or not. Of course, हमें अच्छा लगता है if you play good football, absolutely. But if you play good football by losing year by year, भाई सच में अगर कोई भी ये बंदा बोल रहा है that they were happier being an Arsenal fan in the last 10 years compared to a Chelsea fan, मैं मेरा नाम बदल लूंगा भाई, मैं मेरा नाम बदल दूंगा. Let's be real, and we didn't play shit football with all due respect to Arsenal as well. ठीक है, तो यहां पर मैं बोल रहा हूँ आज के दिन में जो डेक्लन राइस का जो मैंने बात की है, प्लस मैडिसन का जो बात कर रहे हैं अपन, I believe there is a question mark on the motivation. These guys are guys who have turned down clubs like Newcastle and Chelsea for a Spurs. In case of Madison, not directly, but कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था. साथ साथ में in terms of Declan Rice, you have turned down a Bayern Munich कहीं ना कहीं, ठीक है,
Man City kahin na kahin. If you are Mason Mount, you have turned out a Bayern Munich as well as of now as things stand. And if even to some extent a Liverpool, okay, yes, they might not have paid so much money, but I'm just saying, Mason Mount has agreed terms with Manchester United. Okay, Declan Rice has agreed terms with Arsenal. At least almost there, right? So Madison going to Spurs also tells me one thing, that kahin na kahin they want basically the kind of football they play, the starts that they get, and of course a stress-free environment compared to अगर ज्यादा pressure होता है to get you trophies. Spurs में नहीं है वो. Arsenal वाले बोलेंगे है pressure. मैं बोलता नहीं है भाई. Arsenal अगर जीत जाती है Champions League football, that will be भाई the biggest thing that has happened in Arsenal Football Club history. As an Arsenal Football Club fan, if anyone in the chat is saying that they're expecting you to win the Champions League in the next 1 year, I would disagree. They will not. And if Declan Rice believes that he will get Arsenal to Champions League glory in the first year, right, that's a shot in the dark. तो मैं मोटिवेशन पर क्वेश्चन कर रहा हूँ प्लेयर्स का भी. दैट इज व्हाई द रैंट इज कमिंग अपार्ट फ्रॉम मी बीइंग ऑब्वियसली सॉल्टी एंड फ्रस्ट्रेटेड अबाउट चेल्सी द वे वी आर बीइंग रन एज अ क्लब. We cannot run the club and get to top 4 and win things again that we have been known for in the last 25 years, mind you, because of only playing youngsters, because of playing good football. No, we need leadership. We need winners. That's what the difference is. City, by the way, is going for Gabri Veiga. They are willing to pay the release clause, and I don't think Chelsea will be able to compete against City. Exactly. So Chelsea might have to fall back on a Romeo Lavia. We might have to fall back on paying the release clause on Soboslai, which is very expensive. अगर 70 मिलियन पे करना ही था तो हमने टेम्प्ट भी नहीं किया भाई डेक्लन राइस के लिए. टेम्प्ट, आई नो दैट ही वुड हैव टर्न डाउन, ही वांटेड चैंपियंस लीग फुटबॉल, बट अगेन आई डिसएग्री. चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलना के क्या हो जाएगा यार डेक्लन राइस को. द आइडिया इज इफ यू गो टू चैंपियंस लीग फुटबॉल, यू वांट टू बी कंपीटिंग इन ट्राइंग टू विन द टूर्नामेंट. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरेस्पेक्ट. आर्सेनल आर नोवेयर क्लोज टू द फेवरेट्स ऑफ द चैंपियंस लीग. डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं. दैट्स अ फैक्ट ब्रो, फैक्टोस. एनीवे, काइसेडो टू यूनाइटेड न्यूज आ रहा है भाई. देखो यही मैं बोल रहा हूं ना. व्हाई इज माय रैंट कमिंग इन गौरव? आई अंडरस्टैंड, आई विल नॉट बी टोटली डिसहार्टेंड. मैं आप लोग ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करिए भाई. गाइज, एवरीवन इन द ऑलमाइटी फैम, हम लोग घंटा जानता है नो, हम लोग कुछ बात भी कर सकते, थोड़े शॉर्टर वीडियो भी डाल सकते, थोड़ा एंटरटेन भी कर सकते, थोड़ा बहुत बेसिकली ज्ञान भी दे सकते. तो आप लोग चेकआउट करिए मेरा शॉर्टर वीडियोस गाइस. एवरीवन हु हैज चेक्ड आउट, मच लव टू यू. हु हैव नॉट चेक्ड आउट, इवन मच लव, बिकॉज़ दैट कीप्स मी गोइंग. बट we deserve to have those videos watched. Why? Because उसमें मैंने समझाया है. Mason Mount, even एक थोड़ा सा एक ऑप्शन है ना about him staying back at Chelsea, is not so bad. People are यहाँ पर सोशल मीडिया में चेल्सी फैंस, मेरे भाई और बहनों, सब लोग बोल रहे यार पीआर है मेसन माउंट का. तो क्या हुआ यार? They were the best of the best players जो literally transfer request कर दिए, फिर भी रहे players in clubs and they've been happy. Yes, exceptional रहा है. It's not the ideal case scenario, but that has happened. So अगर Mason Mount रहता है, for example, which is a very slight bit, so I can see Caicedo going to United. Yes, absolutely. लेकिन I know two different players है. लेकिन अगर Mason Mount रहता है, मतलब Mason Mount Enzo with a Romeo Lavia, और Caicedo Enzo with maybe a youngish, number 10. I don't know. I rather prefer the second one as much as I love Mason Mount. अभी इतना लव नहीं है, I know कम हो गया obviously because of the way things have happened in the last 6 months. Romeo Lavia is developing. You already have so many young players. You need some experienced players. Exactly my point. By Verratti going to Saudi, bro. Darren has been calling for Verratti throughout. Has Chelsea even tried to tempt? I know बहुत ज्यादा पैसा है सऊदी के साथ, हम compete नहीं कर सकते. Why aren't we even trying? Kessie is not my preference as much as I like Milan, bro. Brozovic, we have it tried. That's the whole point. हमारा जो है, I like the fact that finally we have got directors who want to plan, who want to invest in basically a lot of potential. लेकिन they are treating Chelsea Football Club as a RB Leipzig or a Salzburg. हम नहीं है यार वो. हम नहीं है वो. We are not that. We don't want to become that. They are very good in terms of the way they are run. But हम नहीं हो सकते हैं वो. We are already in बेसिकली अगर एक स्टोरी चल रही है ना जहां पर बेसिकली चेल्सी आर ऑलमोस्ट इन द क्लाइमैक्स, हम क्लाइमैक्स में आकर पूरा बिगाड़ दिए चीजों को. क्यों? क्योंकि भाई पुतिन को अलग ही मन था, एंड ऑफ कोर्स रोमन वेंट ऑफ, एंड देन वी हैड न्यू ओनर्स, एंड देन वी हैड मल्टीपल न्यू मैनेजर्स. मीनवाइल हमने 40,000 प्लेयर साइन कर लिए. भाई ये सब में क्या हुआ एक साल में? वॉट जो भी मेहनत थी ना 20-25 सालों की, दैट इज समवेयर डाउन द लाइन लॉस्ट और फॉरगॉटन अबाउट. दैट डीएनए, द आइडिया इज अबाउट गेटिंग द डीएनए दैट कम्स विद एक्सपीरियंस, or maybe common players at best.
Nkunku or Gallagher, Enzo, Chukwuemeka, where is number 6? Nkunku will probably be a number 10, yes. So you are saying that Nkunku, Gallagher and Enzo. To be honest, is Gallagher a number 6? I don't see that. He's really a number 8 for me. Get Florentino from Benfica. That's a good one. Because again, the Enzo factor is good. I would not mind that, to be honest. Definitely, 100% I agree with that. लेकिन हम पालिनिया के साथ भी हमने नहीं किया. Why? Because हमारे पास ज्यादा फिटिश है. Yes, फुलम का है. हमने ट्राई किया है. Have you even tried to get Palinia? That's the whole point. That is the whole point of the rant. भाई स्पोर्ट्स जीनियस को चेकआउट करिए. भाई सब लोग जो भी यहाँ पर चैट में, आई नो मैं चैट बहुत स्लोली ले रहा हूँ आज, बहुत सारा अंदर भरा हुआ यार. मैं साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, आपका भी लॉट ऑफ ओपिनियन ले रहा हूँ. अगेन कोई भी लाइक बटन नहीं दबाया भाई. लेट्स हिट दैट लाइक बटन गाइस. छोटा सा टारगेट है 150 का. वी कैन इजीली गेट देयर गाइस. माय ऑलमाइटी फैम, कम ऑन. लेकिन सब लोग है, एंड आई जेन्युइनली मीन इट, अपने पैनल के चैनल को चेकआउट करिए जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा पहले लाइन में, अपार्ट फ्रॉम ऑलमाइटी स्पोर्ट्स. लेकिन आई रियली रिक्वेस्ट यू टू चेक आउट द स्पोर्ट्स जीनियस. I really like this guy's channel, bro. He's a much as an upcoming content creator. I genuinely request everyone, and I mean everyone, to subscribe to Sports Genius. और नॉट जस्ट सब्सक्राइब. मैं एक चीज बोलता हूँ ना, आप यहाँ पर भी मच लव 9000 के ऊपर लोग सब्सक्राइब किए भाई. आई नो हम तो घंटा जानते हैं. आई टोटली गेट दैट ब्रो. हम घंटा जानते हैं. मेरे फेस पर हगना लिखा है ना. That's what I know, right? But for people who support know exactly what I'm giving this taunt for certain people. But ये बोल रहा हूँ, बेल नोटिफिकेशन बटन यार, बेल आइकॉन दबाइए यार. You will get to know whenever a new content is coming. The Sport Genius has some of the best content in terms of any new channel. Again, Sport Freak को भी check out करिए भाई. Check them out. NS Sports TV. These are all our members or subscribers who genuinely I believe in. Otherwise मैं नहीं बोलता हूँ, आपको पता है. सुशांत तो बोल रहे chill down after 1st July we are getting players again. I hope and pray that Caicedo का गजम नहीं हो by Manchester United. सुशांत, I really hope so, क्योंकि अगर वो हो जाता है we'll end up with basically a Southampton kind of team. With all due respect, and I love my team, I will still love it. भाई हम तब भी support करते थे, we were shit and we will still do it. But with a Romeo Lavia, even a Gabri Veiga at best, along with an Enzo, इतना young midfield, you cannot win anything, my bro. You cannot get to top 4. Directly बोलता हूँ. अगेन रोहित सिंह भाई, बिग अप. अगेन इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी रोहित सिंह. अगेन मैं मेरा दिल का बात बोलता है. सिंपल सा बात है. कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा. फेयर इनफ. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द होल आइडिया ऑफ द प्लेटफॉर्म इज यू गाइस कैन एक्सप्रेस योर व्यूज, आई कैन एक्सप्रेस माय व्यूज. फेयर इनफ एवरीवन. और भाई इतना तो देखा है फुटबॉल भाई 25 सालों में, दैट आई हैव द राइट टू कमेंट अबाउट एनी क्लब, एटलीस्ट द टॉप क्लब्स एज वेल एज द इंटरनेशनल टीम्स. Messi is good, but Barcelona have received an annual 100 million euros offer from a Qatari team to have the name of Barca as a franchise. Wow, that's interesting news. That by Barca का क्या हाल है? Messi is good. Brozovic, by the way, has turned down the recent offer, salary offer, I believe, from the Saudi club. लेकिन 23 million euros Inter have already agreed. What do you think about that? Again, Amrabat news कहीं ना कहीं उड़ गई है. Parejo is what the news was. Are we okay with that? If you're a Barca fan, do let me know in the chat. Chelsea का कैसी और फरहान नहीं यार, nothing. It's all about project, but अभी Chelsea is all messed up. That's why some players are afraid. It's not some Sagnik. That's the thing. बहुत लोग, और ये एक जैसे होता है ना, एक फॉलो द क्राउड, भेड़ चाल हुई है भाई. यहाँ पर जॉर्जिनो गया जनवरी में, काई हावर्ट्ज को फॉलो कर रहा है. यहाँ पर कोवाचिच जा रहा है सिटी भाई, कांटे जा रहा है सऊदी, मेंडी जा रहा है सऊदी. आई नो कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स वी आल्सो वांटेड देम टू फाइनली गो, बट प्रीटी श्योर यहाँ पर हमने याद तो देना था टू क्लब्स हु आर नॉट आवर राइवल्स और क्लब्स हु गिव अस अ प्रॉफिट. हाउ मेनी हैव गिवन अ प्रॉफिट? आई वुड से you can almost argue Koulibaly is a good sale. कहीं ना कहीं वो भी एक bridge था in the experience we are talking about, but I would take that. Why? Because we have at least Thiago Silva for 1 year. तो वहां पर I'm okay-ish in defense. Midfield में Sagnik, that's the main issue for me. Who is coming in? मतलब which is that senior player in the Premier League, proven player who we are linked with? हमने रूबन नेवेस को भी यार हमने tempt भी नहीं किया. I'm just saying it out there. अरे बिप्रा in the house यार. बाय द वे बिप्रा को मसला यार. अगेन आर्सेनल फैंस, ये एक रैंट मोड स्ट्रीम है. यहाँ पर आई नो दैट कहीं ना कहीं पीपल माइट क्वेश्चन मी क्वेश्चनिंग आर्सेनल्स पुल, बट आई जेन्युइनली बिलीव यार, सच में मुझे लगता है दैट अगर पेप नहीं रहते सिटी में और अगर आर्टेटा नहीं रहते इन द पास्ट, पेप्स नंबर 2, I genuinely believe, and I know we have to kahin na kahin commend Edu and the work that Arteta has done. I'm not saying he's a bad manager. People saying that I'm being unfair. I am saying that अगर एमरी रहते ना आर्सेनल में, they would have done better in terms of the results the last season.
अगर वो उसी पॉइंट पर रहते तो आई थिंक एमरी वुड हैव वन द लीग. सेकंड, will they have had the pull that maybe an Arteta is having right now? I don't think so. गौर करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से. I know पैसा बोलता है, and that's something that they have to get the credit for, but just saying it's not just all about money. Chelsea Man United awfully in transfers, yes, absolutely. भाई United का क्या यार, बाई चांस अगर मेसन माउंट नहीं होता तो I think Caicedo is the backup option. लेकिन striker, what are we talking about? United, Kane looks like Bayern Munich. I know Tottenham मना कर रही है, I genuinely believe वो हो जाएगा. Real Madrid, I know all eggs in one basket for Mbappe. वो if not this window, next window में हो जाएगा. What about Manchester United? Is a Højlund good enough to start? जो हम बात करें Chelsea का in midfield, is your forward line good enough to basically get you to where you belong? I don't know. I mean, एक क्लब का क्या गलती होगा to get a player? It's a transfer window. You go for players, you get it. You don't expect a player to join. Exactly, swap. That's my point. मेरा पॉइंट ये है कि भाई आप आसानी से आपके राइवल्स को कैसे जाने दे रहे हो. That's the whole point. And people saying that Mason Mount इतना ज्यादा क्यों टफ एक्ट करी चेल्सी, व्हाई डोंट वी डू दैट यार. ऑलरेडी हमने दे दिया है Kai Havertz to an Arsenal, Kovacic to a Man City. भाई Mason Mount to Manchester United as well, वो भी सस्ते में नहीं यार. आप सच में बोलिए, अगर Mason Mount काइंड ऑफ कैलिबर प्लेयर अगर रहता अभी के दिन में, हम आई नो मैं आप लोग हंसेंगे, लेकिन भाई माइनस सब्ट्रैक्ट करिए, टाइम को सब्ट्रैक्ट करिए, एक साल पहले जाइए, 1 year back, 12 months back, you go and just go back in time and tell me if anyone is telling me that if Mason Mount would have been in Dortmund, that Bellingham was in Dortmund, I would argue Mason Mount would have got as much transfer fee as well as much as Bellingham, almost, if not more. And I'm saying you, at least comparable रहता, absolutely. तो मैं बोल रहा हूँ yes, कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और मैटर, बट आई एम जस्ट सेइंग आप इतना इजीली नहीं दे सकते हो आपके राइवल्स को. कहीं ना कहीं द फैक्ट इज दैट 1 year थिंग इज व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज बीन वेरी स्ट्रिक्ट ऑन. आई एग्री, एक साल बाकी कॉन्ट्रैक्ट में, बट he is Mason Mount. We cannot forget what ability he has shown in the Premier League, in what ability he has shown in the Champions League in the last 3-4 years. Generally, last एक साल में हगा है, but so is every Chelsea player. There is something off the pitch that is wrong. इसलिए सब लोग छोड़ रहे हैं ना. तो आप ये बोलिए, साथ साथ में आप अगर खरीद रहे हो तो why aren't we trying? That's my whole point, Swap. अगर Arsenal win either UCL or EPL next season, I'll shave my beard for clean shave. भाई देखिए everyone, look at this, Terrain का claim है, and UCL का तो मैं भी यार साथ साथ में बोल रहा हूँ. Absolutely. Not a Chelsea fan, but always love the vibe of Chelsea. I still don't get it. Signing a reputed number 9 is a no-brainer. Still, they are not linked with any. Myself, a Madrid fan. Yes, by the way, Lukaku situation भी हम solve नहीं कर रहे. Inter Milan playing low ball, going for a little bit loan deals plus 30 million, buy clause. पता नहीं यार ये सब इतना complicated क्यों कर रहे हैं Inter Milan यार. भाई आप Champions League final खेल के आए हो. आप you're getting some money out of Brozovic, hopefully, right? Just invest in Lukaku if you really want Lukaku, bro. आपने anyway you have got Thuram, right? So just invest. I know Lautaro Martinez to Chelsea is not realistic, and yes, Chelsea fans are realistic नहीं है. Vlahovic to Chelsea, I believe can be. Will Chelsea go for it next after Caicedo? Let's see. Al Nassr are complying with every demand of Brozovic. The player still has doubts about the move. Negotiations are stalled. The player is open to move to Barca. Exactly. So the thing is, Javi has personally spoken to him, and that's the reason why 2 months में होता है. And again, player का motivation questionable है. Again, I know Gundogan has already gone to Barca, जो हमने cover ही किया था channel. For people out there to check out that free transfers वाला short video भी, वो तो बोलेगा ही, लेकिन उसने clearly बोला, player like Gundogan speaks to listen. उसने बोला है that देखिए, with all due respect, you go to Saudi only if there are no good offers. And by good offers, you mean not just money. You mean clubs which are winning clubs. And Barcelona is one. As much as, recently they have been in transition. But they are getting back to it. तो मैं अब काफी surprised हूँ वहां पर दो चीज सोच भी क्यों रहा है. I understand the money factor. Brozovic will be a starter at Barcelona, bro. He'll be a starter. And I'm not even doubtful of that. वो starter रहेगा Barcelona में, period. In fact, Gavi substitute रहेगा. Brozovic along with Frankie might start with Gundogan and Pedri ahead. They might go like a City way. They might just go that. So that's a no-brainer for me. अभी भी बार बूढ़ा नहीं है. Just like Kovacic, I think he can make that move. But again, it depends on what his personal things are. मुझे ये भी मालूम है that not Gundogan but Brozovic has been बहुत interested in वो cryptocurrency and all that. He's actually owning some things. वहाँ पर the Saudi connection is there. तो वहाँ पर somewhere down the line एक होता है ना कि untold kind of contract है कि यार he'll go to Saudi at some point. लेकिन I genuinely believe that he's kind of wasting his 2 years. Again, Verratti,
Brozovic, Ruben Neves, खून खोल रहा है मेरा. These are all players I would bloody bite your hand off to get at Chelsea right now. Newcastle had interest, but they didn't approach. Yeah. Ankit, what's more hurting is I know Rice would have said no to us, considering no UCL football. हमने try ही नहीं किया. Exactly. हम मेसन माउंट के सागा में रह गए भाई. डरेन सॉरी ब्रो अगर आपका सुपर चैट में लेट ले रहा हूँ. अगेन बिग अप टू एवरीवन कमिंग. थोड़ा बहुत धीरे ले रहा हूँ चैट्स. आई वांट टू एड्रेस एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल बिकॉज इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर आउटसी. वेस्ट हैम आर ट्राइंग फॉर पालिन्या बट हम नहीं. Or that's the thing. Fulham, Chelsea, you know the history, and that's where West Ham might just beat us to that, and it's shocking. और एक और क्यों? क्योंकि वो 27 साल का है भाई, 20-22 साल का नहीं है. We don't get value for money back. Rubbish. Animesh तो बोल रहा है I would rather a Caicedo than Mount in United system. Agreed 100%. Any United fans disagreeing with this? Let me know. 100% agreed with this. Okay, Brozovic entourage has informed Barca that the club has a few days to make an offer to Inter and present an offer to the player. If they succeed, Brozovic can be a cooler. I think it's all about basically the finances at the end of the day. It comes down to that, मेरे ख्याल से. How to be a Chelsea player, be under 19 and have 2 legs and hooray, welcome to Chelsea, bhai. Therein, truth, utter truth, yaar. What do you think about the lineup of Sane, Kane, Mane, and Bayern if Kane signs? It's absolutely sensational. Predator gaming. इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ. वेरी वेरी सरप्राइज दैट जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था इन Kai Havertz, in Mason Mount as well as Declan Rice for Bayern, Thomas Tuchel being manager, they have turned down for a Mikel Arteta. Anyone in the chat thinks that Mikel Arteta is a better manager than Thomas Tuchel? Anyone in the chat? Anyone in the chat thinks that Arsenal का better chance है for silverware than Bayern Munich? Anyone in the chat thinks that Arsenal play better football than Bayern Munich, what they could be? Not, I'm not saying last 4 महीनों में जो खेला है टूकल ने, लेकिन Bayern Munich के players जो है compared to Arsenal, let me know in the chat. I believe it's a no-brainer. आप अगर relocate नहीं करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आपको stress नहीं चाहिए नया country में वापस से, trying to prove yourself. That is how it is. It is the easier option and पैसा बोलता है. भैया, can we have top 15-20 Chelsea transfer from 2020? Yeah. बिल्कुल बिल्कुल गौरव भाई. अगेन मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं लास्ट 20 इयर्स वाले भाई. पीपल हैव नॉट चेक्ड आउट दैट सीरीज. यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ कंटेंट. कंसीडर गिविंग मी अ चांस ब्रो. बिग अप टू एवरीवन इन द चैट एज वेल भाई. कंसीडर गिविंग मी अ चांस. आप बेल आइकॉन दबा दीजिए. आप देखिए मेरा प्लेलिस्ट. सिंपल सा फंडा बोलो, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. बहुत सारे प्लेलिस्ट है, बहुत सारे वीडियोस है. कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे चैनल्स है. आई टोटली एग्री. जब भी फ्री हो ना, मेरे होम अपने चैनल में, आपके खुद के चैनल में, ऑलमाइटी ब्लूज एफसी में होम पेज में जाइए. होम पेज में देखिए द काइंड ऑफ प्लेलिस्ट दैट आई एम लिस्टेड एंड फॉर अ रीजन. चेक आउट नो योर क्रिएटर जो हमने किया था 1.5 साल पहले. चेक आउट लास्ट 20 इयर्स और टॉप 5 सीरीज. चेक आउट द वर्ल्ड कप आइकॉन्स. ठीक है, दोज आर समथिंग दैट यू विल लव इट एंड आई एम नॉट इवन डाउटफुल अबाउट इट. अमराबाद को मैंने भूल गया, सबको भूल जाना ही चाहिए. सो स्पोर्ट फ्रीक बिग अप यार. The recent Instagram story of Jorginho, Kovacic, Kai are poking. Don't you think? नहीं बिल्कुल. Darren, have you seen me reacting this way regarding Kai Havertz or Kovacic? Anytime, bhai. Have you and anyone in the chat who follows Almighty Blues, Almighty Sports? Do you all have seen in the last year, तीसरा season हम लोग करने वाले हैं. By the way, just to let you all know, newer subscribers. Anyone has seen me reacting the way if we have lost players to a competitor or maybe a potential competitor? No. The whole idea is Kovacic बावला हो गया भाई. बावला हो गया है, जैसे मैं बावला हो रहा हूं अभी. Kovacic बावला हो गया कि भाई कहां चल गया है. I have gone to Real Madrid again is what he's feeling. Man City are treble winners. They are great. Absolutely sensational performance by them in the last few years. Absolutely. Let's be real. Man City will not be a Real Madrid in 1 year. जब तक Kovacic का season kind of खत्म हो जाएगा next season, they'll not be. And Real Madrid अभी भी transition season हो सकता है उनका. But I'm just saying. And he is someone who's won so much stuff. For Kovacic to say that I am going to win at Man City, बंदा कितना जीता है भाई. इतना शोर शराबा क्यों करना? That's my whole point. I know he does not dislike Chelsea. That's not the reason why he's gone. But there is something wrong with the owners as well at the same time of Chelsea. There is something wrong behind the scenes. There is something not convincing about Pochettino that these are all guys leaving easily. Chelsea देने जा रही क्योंकि हमारे पास इतने players है तो हमें खाली करना है ना. We are not getting great. By the way, Ruben Loftus-Cheek भी जा रहे मिलान and done. कल वो मेडिकल्स के लिए जा रहे हैं. People check out, मैंने कम्युनिटी में शेयर किया. Brilliant video on that. Pulisic जा रहे, तो इतने सारे लोग जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं there's a vacuum created. And that's something that the Havertz, the Kovacic of the world, the Jorginhos of the world are celebrating it, which is not something which I'm liking. हम double standard नहीं रखेंगे भाई. हम अगर लुकाकू को गाली देते तो यहाँ भी देना चाहिए. They're not snakes yet. But I'm saying that
आई एम नॉट हैप्पी द चेल्सी फैन द वे दैट उनका जो सोशल मीडिया बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, वो सच में बोल रहा हूँ, हार्ट टू हार्ट गाइस, नथिंग एल्स। बट सीनियर प्लेयर लेना तो पाप है एज पर बॉली, पता है बिल्कुल। आप अगर लाते हो लाइप्जिग, ब्राइटन और सॉल्जबर्ग के डायरेक्टर्स तो यही मिलेगा यार आपको, अंकित, एग्जैक्टली माय पॉइंट। वी शुड हैव गॉट पीपल फ्रॉम लिवरपूल, रियल मैड्रिड, भाई वहां के लोग लाने चाहिए थे, एटलीस्ट 1 or 2, और नेक्स्ट चेल्सी, यू नो, व्हाई इजंट पेटर चेक देयर? देखिए दैट्स द थिंग ना, डू दीज गाइज अंडरस्टैंड व्हाट चेल्सी हैज बिल्ट? भाई मैं लिखकर बोलता हूं, आई नो कहीं ना कहीं ब्रैग करो, एवरीवन इन चैट लेट मी नो इफ यू डिसएग्री। अगर पॉल विंस्टनली को यहां पर खड़ा किया जाए मेरे साथ, भाई ट्रस्ट मी ब्रो, यहां का चेल्सी का हिस्ट्री बोल दूंगा, उसको सालों को घंटा मालूम है। लेट मी बी रियल, बहुत सॉल्टी हूं मैं, बहुत सॉल्टी हूं गाइस, बहुत सॉल्टी हूं। मराठी क्यूलर अगेन गाइस, बिग शाउट आउट टू दिस गाय, हिज डेडिकेशन इज नेक्स्ट लेवल। भाई चेक आउट मराठी क्यूलर, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर है। मच लव टू ऑल द कम्युनिटी, मच लव टू ऑल द क्रिएटर्स, बट भाई हम तो घंटा जानते नहीं है हमेशा। डू गिव थोड़ा सा प्रोत्साहन टू द न्यूअर क्रिएटर्स, डू गिव थोड़ा सा प्रोत्साहन टू बूढ़े पीपल लाइक अस। 35 पर बूढ़े हो जाते हैं लोग, it seems, especially when we have goats like Messi, Ronaldo and Thiago Silva, you think 35 पे बूढ़े हो जाते हैं। But just give us a chance bro, give us a chance, give Marathi Kular a chance as well, hit that bell notification icon as well. Brozovic to Barca would be very good, exactly. Chelsea could also go, but I wish they go. I don't think so. Let's be real, as much as मैं चाहता हूँ बारसा, चेल्सी और सऊदी आएंगे तो बारसा या सऊदी जाएगा, अनिमेश, that's a reality. Do you think Poch is happy with Kepa considering Onana attitude and ego issues, or doesn't want to overpay for Diogo Costa? I think हम end up करेंगे भाई डरेन, एक स्टेटमेंट साइनिंग तो करना है। Szoboszlai will lose it, ठीक है। We have already lost obviously couple of players, Caicedo hopefully हम lose नहीं करें, लेकिन is it a statement signing? Not sure. Vlahovic may be that guy in the end of the window. Osimhen realistic नहीं है, Lautaro नहीं है। I know कहीं ना कहीं we don't need those statement signings anymore, but some point में even the players need to feel confident and feel that यहाँ पर project is something. They are not as attracted for whatever reason. Champions League सब बहाना है भाई, सब बहाने हैं, सब बहाने हैं। आप नहीं बोल सकते मुझे people are going to Arsenal to win the Champions League. Don't get me wrong. Don't let me tell certain things which I shouldn't be saying. Brozovic of course start करेगा भैया, help भी होगा बहुत, बिल्कुल। I think Brozovic is a no-brainer. He should go to Barca as much as the future UCL compare, opposition club. I would not like it, लेकिन it's a fact. मैं देख रहा हूँ डेरेनो का कमेंट, हुसैन, आर्सेनल will still play like a club of Spain in front of Bayern. हुसैन बोल रहे हैं, if Chelsea investing huge money for target man, they should go Lautaro Martinez best option. लेकिन will Inter be happy with Lukaku and Thuram? I don't think so. बिल्कुल ओके भाई, स्पोर्ट फ्रीक ब्रो, अगेन बिग अप यार, अगेन पीपल, very good content creator who's coming up. Of course we all are learning with you guys, but definitely check him out as well. People, again thanks a lot for that comment, yeah, sport freak. Just give us a chance is all we are asking guys. Why was Marina Granska let go? Bhai usse to I don't have any major issues. I think major issue है Petr Cech का. Even Marina did not understand really the Chelsea DNA, which what Petr Cech would understand. I would say Petr Cech going is more disrespectful generally for Chelsea's board to do. I think they should have spoken to him and kept him. कहीं ना कहीं मुझे लगता है Petr Cech kind of people, आपने देखा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, people do watch all the transfer announcements videos of 2021 2022. Petr Cech or Frank Lampard or Thomas Tuchel were reasons why they came, and Thiago Silva. These were 4 main reasons why people came to Chelsea, apart from Chelsea's history and European pedigree. We aren't feeder club. I don't know why they are buying these youngsters. पता नहीं यार। नाइस अग्रीमेंट रीच्ड, चलो बिल्कुल भाई। देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर आप बोल रहे हो दैट आर्टेटा हैज डन सुपर्ब थिंग्स, भाई रॉबर्टो डी ज़र्बी मैं बोल रहा हूँ हैज डन इवन बेटर विद ब्राइटन। भाई डेक्लन राइस आपको देखना है फॉर अ क्लब व्हिच इज अपकमिंग एंड व्हाट पॉजिटिविटी, गो टू ब्राइटन ब्रो, आई एम जस्ट सेइंग, पैसा नहीं देंगे, आई एम जस्ट सेइंग, बट द मोटिवेशन ऑफ प्लेयर्स एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डायरेक्टर्स आर क्वेश्चनेबल. In my opinion, it's definitely questionable. Again, even I like Frank Kessie, but अगर आप सच बोल रहे हो, अगर आप मुझे ब्रोजोविच दे रहे हो, अगर आप मुझे रूबन नेवेस दे रहे हो, आ नहीं रहे, फ्रैंक केसी दे रहे हो श्रीनाथ, अगर आप मुझे देते फॉर एग्जांपल काइसेडो, और इफ यू आर डूइंग गिविंग मी, और कौन है भाई, गैब्री वेगा,
Frank Casey, Gabri Veiga, I would not rate them as much as maybe the others. As much as Gabri Veiga, मैं बोलता हूँ just about ahead of Casey. Yes, being a Milan fan as well, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा player है, but I don't think that's the ideal player we want. I would happily accept him. But जैसे Ruben Loftus जा रहा है Milan, where Milan are going for more midfielders. Why? Because he's not sufficient. We have to go for more midfielders. We need a goalkeeper. Yeah, I agree 100%. Manu Kone, Turam, yeah, backup again. Animesh, starter. Chelsea needs starters, bro. हमारे starters सब गए हैं. We are not having Jorginho, Kovacic, Kante, Mason Mount, Gallagher. Will he have a starter? I don't think so. Barca planning to sell 6 players and sign 4. The outs are Longley, Umtiti, Nico. Oh, Nico is out. Messi is good. Nico, I think he should be a good backup, bro. Dest, I agree. Casey also थोड़ा बहुत harsh है, but I can see why in terms of जो Barca football खेलना चाह रही है. Why people might hate me till now, Eddie Howe has done a better job in Newcastle than Arteta. 100%. Not even a doubt. 100%. अच्छा क्या है? That doesn't mean Arteta has done a bad job. Arteta has done a good job. Absolutely. लेकिन generally Arteta, because he's Arsenal and because he's number 2 of Pep, definitely he gets a lot of media attention and a player pull. Let's be real about it. ठीक है? I know नहीं होगा, but instead of Casey, just try for Benacer. नहीं यार, Benacer injured है. He's out till the end of the season. Again, do check out that video from Football Kush, which I was part of as well. आपको पता लग जाएगा जो आप बोल रहे हो. Benacer is a no-brainer. Is definitely not coming. No two ways. But again, यार, big up to everyone joining. बहुत सारी चीज हमने बात की है, बहुत सारा rant किया है. Again, maybe भावनाओं में बहकर अगर मैंने किसी के basically feelings को hurt किया है. If you are an Arsenal fan per se, I'm not a hater, bro. आप लोग जानते हो, it's a fan channel for all to see. Always and always you're welcome. I loved all the Arsenal subscribers on the channel. मैं honest truth बोलता हूँ, वही बोलता हूँ. Simple as that. Again, thanks for Darren for the super chat, Srinath for the super chat as well. Again, of course, thanks to everyone coming on यार. हमने काफी सारे बातें की है. I'm just taking a quick look. अगर कुछ नया चीज आया है in the last 15-20 minutes. But yeah, again, we have to offload Lukaku and we have to get एक अगर मार्की साइनिंग बोल रहे हो ना, आई वुड लाइक टू सी डेफिनेटली व्लाहोविच. आई नो कहीं ना कहीं अपने पैर को लाड़ी मारना हो रहा है. हाउ मेनी बिग साइनिंग्स हैव वर्कड फॉर चेल्सी, बट कहीं ना कहीं अदर प्लेयर्स आर पुल टू आर्सेनल. व्हाई? बिकॉज XYZ प्लेयर्स आर आल्सो गोइंग टू आर्सेनल. तो वो एक प्लेयर पुल जनरेट करता है. And that is something that unfortunately we need. Yes, we bought a lot of players like Enzo, especially in January window and last summer as well. लेकिन भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है. एंड यूरोपियन पेडिग्री की अगर हम बोल रहे हो, भाई सब लोग मिलान फैन भी हो, रियल मैड्रिड भाई यूरोपियन रॉयल्टी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मिलान, बायर्न म्यूनिख, ऑफ कोर्स इंटर मिलान टू सम एक्सटेंट एज वेल. भाई कौन सा मिस कर दिया भाई? चेल्सी मैं बोलना चाहूंगा, अभी तो मैन सिटी भी आप बोल सकते हो. आर्सेनल आर नॉट इन दैट कॉन्वर्सेशन ब्रो. इफ पीपल आर टेलिंग मी अगेन that Declan Rice is going there to win the Champions League, I would highly disagree. ये पैसा बोल रहा है, ये बोल रहा है गारंटी टू प्ले लेस स्ट्रेस कंपेयर टू अगर आप सिटी में जाते, अगर आप बायर्न में जाते, क्योंकि वहां पर ज्यादा प्रेशर है टू विन ट्रॉफीज. बट कंग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल फैंस, लुक्स लाइक यू आर गेटिंग Declan Rice. Will it take them to the Champions League, maybe semi-finals? I still doubt it. Will it take Arsenal to the Premier League glory? Challenges तो already थे. Will it take to Premier League glory? I still doubt it. ठीक है, that is not Arsenal की गलती. That is because City are so good. And why? Because City are also signing a GVARDIOL and he will be next level altogether. Apart from a lot of other players, already Gabri Veiga की बात कर लिए. But again, would you have signed Arteta instead of Poch? No. Please buy SK23. I know Poch hasn't done much as well. Or many बोल रहे Poch is great manager. Both are very good managers. There's a difference. लेकिन मैंने बोला, पीपल हु हैव फॉलोड माय चैनल इन द लास्ट 6 months स्पेशली, मैंने बोला काफी दफा दैट हमें चाहिए लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस इन द मैनेजमेंट जोन, और वो Poch brings a little bit more compared to Arteta, let's be real. और again, what has Arteta done really in terms of getting to the next level? इतना जो लंबा प्रोजेक्ट, इतना बैकिंग मिला है, ट्रस्ट मी, XYZ भी होता तो आप एक्सपेक्ट करते वो. And yes, वो कहीं ना कहीं has met expectations. He has not exceeded expectations. Let me tell you very honestly. Champions League pull is real. It might be real, but is Arsenal there to compete or Arsenal there to win the Champions League? And that's my disagreement यहाँ पर. Chelsea, yeah. चलो ठीक है भाई, प्रतीक नहीं जीतेंगे हम यार, हम तो घंटा जीते यार.
हेट दीजिए यार, हम तो घंटा जानते हैं, हम तो घंटा जीते यार, हम तो घंटा जीते, जस्ट बीट रियल मैड्रिड इन द कप विनर्स कप, यू नो, इफ यू नो यू नो, आपको पता भी है क्या है कप विनर्स कप मेरे भाई। एनीवे, और लेट्स बी रियल, people forget, but anyway, let me not give hate to Arsenal, but people who do not know the facts, get your facts right, that's all I would request. अगर आपका ओपिनियन है, fair enough, it's totally up to you. भाई देखिए, यहाँ पर आई वुड लाइक टू आर्ग्यू दैट मैड्रिड के लिए इट वुड बी बेस्ट, बिकॉज एम्बापे अगर नहीं आते इट माइट वर्क आउट इन द एंड, लेकिन मुझे लगता है बायर्न ही जाएंगे। देखते हैं यार क्या होता है, व्हाटएवर हैपेंस देयर। माउंट का सागा तो भाई अलग ही लेवल है, दे आर मीटिंग एंड थिंग्स माइट हैपन, बट अगेन थिंग्स आर हैपनिंग, घंटा गैंग इज हियर ऑलवेज, but much love for everyone भाई, much love for all the haters as well, because कहीं ना कहीं that motivates us, but hit that like button भाई सब लोग, let's get to 175 likes यार, 175 likes कर सकते हैं before the stream ends. Mods help me out, कितने likes हुए अगर मैंने पूछा नहीं तो let's do that. अगर you're not subscribed, consider subscribing. Always a fan channel for all to see. हम बहुत सारे shorter videos के साथ भी आ रहे हैं, दो channels, Almighty Sports वहां पर एक quiz आया as well as यहाँ पर, तो hit that bell icon, और big up to the chat, especially the members and mods भाई। Chelsea buck up, we have to do something. Bye guys, much love, see you soon, and congratulations to Arsenal, and looks like Man City as well, kahin na kahin plan mein tha. Bye.